Hello everyone. My name is Priyanka Bajaj. A very warm welcome to speaker, member and committee member. Uh, Feel blessed and privileged to extend my warm welcome to all the presenters for the webinar on SEZ Import-Export organized by CIRC on 5 years of completion of GST. The speaker of the session will be our well-known CEO of Jaipur, Sir Yash Chadha, sir, giving us the detail of the topic, and also a special address by delivered to us, CA Akash sir from Jodhpur. We have management committee member and program coordinator. Cooperative Society, Indirect Taxation in Cabinet of Professional Degrees. He's also practicing in indirect taxation for almost 6 years and handling GST, service tax and excise matter with appeal and hearing. We are very grateful to sir for accepting our invitation and giving us the valuable time. Now I would like to invite CA Rajiv Gupta sir to welcome our chief guest and audience. Over to you, sir. Thank you, Priyanka ma'am. जैसा कि प्रियंका मैम ने कहा कि हमारे बीच में आकाश जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और बहुत टाइम पर सर भी अवेलेबल है, तो मैं अपने सीआरसी की तरफ से, अपने सभी टीम मेंबर की तरफ से, सेक्रेटरी साहब, हमारे सिकासा चेयरमैन अनिल जी और किशोर भाई साहब, सभी अभी ट्रैवलिंग मोड में है क्योंकि वन स्टॉप टू अनदर स्टॉप लगातार लोकेश भाई साहब और हमारे अनिल जी की अनिल भाई साहब दोनों की मेहनत से इस बार सीआरसी 72 डेज में 75 प्रोग्राम कर रही है और उसी सीरीज में ये 7 डेज की एक हमारी जीएसटी की पाठशाला आपके बीच में है, मेंबर्स के बीच में है। तो बहुत ज्यादा मतलब सब लोग लगे हुए हैं, डिफरेंट फिजिकल में भी और वर्चुअल में भी। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वर्चुअल की भी, फिजिकल की भी। तो आकाश जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया पूरी सीआरसी की टीम की तरफ से। मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे बीच में जो हमारे स्पीकर है यश जी, तो उनका जो डेलिब्रेशन है मैंने पहले भी कई बार यश जी को सुना है। तो यश जी आपका भी धन्यवाद, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया अगेन एक बार फिर से। तो सीआरसी कुछ भी नहीं है सर, हम लोग जो भी कोशिश करते हैं वो आप सब की जो मेहनत है और उसी का फायदा जो मिलता है पूरे मेंबर्स को एट लार्ज, बस उसी में कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हुए हैं। और उसी उम्मीद के साथ कि आज भी इस प्रोग्राम से जो हमारे जीएसटी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लिया गया है, तो उस टॉपिक की जो भी लोगों की डाउट्स है, क्वेरीज है, वो मैं उम्मीद करूंगा इमीडिएट रिजॉल्व हो गए। फिर भी अगर कहीं पर किसी मेंबर्स को कहीं अपना कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है या प्री डिटरमाइन है, तो वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में या जैसे भी प्रियंका मैडम जब अलाउ करे विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, तो वो उनको बाय रेजिंग योर हैंड वो उस समय आप उनकी जो भी क्वेरीज है उसे ले लीजिए। तो इसी के साथ अगेन फिर से सबका एक बार वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ द सीआरसी। थैंक यू। ओवर टू प्रियंका मैम। Thank you, sir. Over to Akash, sir. A very good evening to all of you. I extend my warm regards to all the members of CRC team, to moderator Priyanka Bajaj, and to my friend and speaker Yash Chadha. It's really a pleasure for me to be part of this industry-specific analysis organized on this 75th year of independence on completion of 5 years of GST. Today's topic, as you said, SEZ import and export, to my understanding, a very detailed topic, and we have seen a lot of issues since the inception of GST. Although those issues have been sorted out gradually, like initially we have seen issues related to duty drawback claim, and there were issues related to purpose of claiming refund, and so on. So with the time, these issues have been sorted out, and we hope that today also we learn a lot from our eminent speaker Yash, and we will definitely understand that how we have to report various transactions in books of accounts when exports are there, then how to report SEZ transactions in GST returns, and how to claim refund of the same, what would be the provisions related to merchant exports, high sea sales, and then there are some
GST implication on ocean freights. So a lot of things which we have to understand today. Then I would like to important rule, that is rule 96B, which I think it is not yet willed because department has not initiated any action under rule 96B. So that can be one of the important rules. Then I think rule 89 is also there, where capping in relation to a value of export of goods is there. I wish Yash to take a detailed note on that also. So with these words, without taking much of your time, I wish that we all should hear from our eminent speaker, Yash, and gain a lot from his knowledge and wisdom. Thank you. Thank you, Akash sir. So our today's speaker is Yash sir. He's a fellow member of ICI. He's associate with Dhadda and Associate as a partner. Sir has 11 years of experience in the field of indirect taxation with concentration only on GST, service tax and excise matter. Currently engaged in handling litigation along with advising clients, structuring transaction and conducting due diligence in given field of taxation. He is also a special invitee to the Indirect Tax Committee of ICI for the term 21-22 and was also earlier part of committee for term 18-19 and 19-20. He is also a panel of CII as GST, service tax, excise advisor for industry member. He has presented ICI in Regional Advisory Committee, Rajasthan, under aging of Chief Commissioner of Excise and Customs, Jaipur. Yes, sir, have deep interest in academic discussion, upgradation, and trainings. He was written handbook on principle of classification for goods and services under GST, and also a casual taxable person for IDTC of ICI. He has delivered lectures in different parts of India and is also a regular attendee of various study groups on GST conducted by CTC, ICI, and other firms as a group leader and coordinator. He's an impaneled trainer of GST, ICI, and Regional Training Institute. He's also passionate to engage in grooming young professionals of CA, CS, MBA on topic of soft skills and professional life management. We are very grateful for you, sir. Over to you, sir. Thank you so much, madam. Thank you so much for this wonderful introduction. Good evening to all the participants, respected chief guest and dear friend Akash, dear Rajiv Gupta ji, Lokesh Maheshwari ji, Anil Yadav ji, and all other committee members who are here. First of all, I would like to thank CIRC for giving me this wonderful opportunity to be part of this 7 days program on GST, on completion of 5 years of GST and 75 years of this Azadi Ka Mahotsav. I was part of, in fact, I heard few of the sessions in last 2 days in bits and parts. And I think the manner in which the program has been planned and conceptualized, it's quite interesting, and all the compliments to the CIRC team. जब हम 5 साल की बात करते हैं, whenever we talk about anything which is completing 5 years, generally 5 years is a milestone. And when it is a milestone, it can mean any sense. Maybe in terms of अगर हम हमारी CA की journey में देखें, so generally a student who enrolls for the course, he understands that average approximately takes between 4 to 5 years to complete CA. As chartered accountants, we know that when I'm an ACA and from ACA to FCA, that journey of 5 years is quite an exciting and a challenging journey. But when I have that tag of FCA with me, that becomes quite important. If you look at from the bigger perspective, government ke perspective, so you look at it, so every 5 years, the government is set to change, and you look for that what has happened in last 5 years. If you have to compare GST, if you have to look at GST and to see what are the possible brackets under which I can analyze GST, what has happened in last 5 years, then probably one thing which we are very sure of is a lot of churning has happened in GST in last 5 years. A lot of activities have happened around this act. A lot of changes have happened in this act. And probably when this law came in, everybody said this law is a newborn baby and you have to give it its own time. So probably that now that newborn baby has completed 5 years. And hum sab jante hain ki when a baby completes 5 years, then probably it is that time where it starts going to the school.
And when it starts going to the school, it starts learning a lot of things. And that learning is quite a productive learning. It's quite a structured learning. So if you look at it, पिछले 5 साल में इस कानून के साथ में क्या हुआ है and where are we standing today? And if you really compare that, at the end of it, I think all of us would agree that still that law is not settled yet. And I think that's what I generally say whenever I start. I try and keep a standard presentation first slide. And I always say that this law is not settled yet and nothing has changed in the last 5 years to say that, can we say that now this law has become matured enough to consider the other aspects? Probably it will take some time, but yes, the changes have been in the right direction. And before I go to the topic, I think 5 साल पूरे होने पर it makes a lot of sense actually to rewind, go back and just read again, which that one particular paragraph which was said by the then CSTAT president, Sri Goda Raghuraman, when he was reading the Constitution Amendment Bill way back in 2016. And in one of the inaugurations of Hyderabad bench of CSTAT, he was asked this question that what are your comments on this Constitutional Amendment Bill? How do you look at it? Probably at that point of time when he said something, maybe it was too premature for people to understand what he was trying to say. But I think after 5 years, when you look back what statement he made, it made a lot of sense that time. And it is contextually, you can relate to what he said. And he said, when I saw the GST bill, it is mind-boggling constitutional complexity. It is neither the exclusive list nor the concurrent list. It's the 4-dimensional animal. It is post-Einstein physics. Henceberg, uncertainty of quantum mechanics is elementary compared to the complexity of this. Even the political complexity of states and union coming together on the continual basis to ratchet the policy of GST is a huge challenge. It is an economical challenge. It is a political challenge, policy challenge, and administrative challenge. It is an adjudication challenge. So that is the next animal waiting to pounce on you, but we have to fight, we have to survive. And he kind of brought in all the challenges probably he foreseed at that point in 2016. And when you look at it, you realize we have seen a lot of adjudication challenges. We have seen jurisdictional issues. We have seen the changes of rates taking place. In fact, Akash rightly pointed out about some of the rules which probably have not been put to use by the government up till now. And now when they're going to use it in context of our topic of import and export, how are they really going to use it? So yes, it has been challenging in last 5 years. Probably none of us would say at this point of time that probably those challenges may reduce in next 5 years to come. But that's how a chartered accountant probably survives. He likes to face the challenges and he likes to really look at the things. But I think one thing which has remained constant, which has not changed, and that's the good part of it, that is the soul of this law. That is the inner spirit of this law on the basis of which it was brought in India, and all other indirect taxes were taken away. So in last 5 years, one thing which was really told to us is GST को भारत में लाने का जो उद्देश्य है, that is that free flow of credit, and that free flow of credit is based on the concept of destination based consumption tax. So maybe जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था उससे हम बहुत सारी चीजों में थोड़े बहुत बदलाव या काफी बदलाव करके हम आज जिस स्वरूप में खड़े हैं वो स्वरूप थोड़ा अलग होगा. But still, when you look at it conceptually, things have one thing which has remained same is the movement of taxes. So like for somebody who is sitting outside India is sending goods to somebody who's into India, all of us know that there is a levy of customs plus IGST. And from that, if somebody who's sitting in one state is sending goods in another state, then we know that there is a levy of IGST. And somebody sitting in same state selling goods to another person in the same state, then there is a concept of CGST, SGST. And from India, when I'm sending goods outside India, it becomes zero rated supplies. And all of this, you realize that one thing which GST has done is it has ensured that the chain remains constant. The chain does not changes. The people who are part of this chain, if they are duly compliant, if they are registered, and they really give trust to the compliances, there would not be any problem. तो ये एक आत्मा अगर मेंटेन रहती है, और स्पेसिफिकली अगर ये इस एग्जाम्पल में देखें जो इंपोर्ट से शुरू होकर एक्सपोर्ट पे खत्म हो रहा है, जो हम कॉमन पार्लेंस में समझते हैं, it kind of really makes sense now to get back to our topic, that is export, imports and SEZ. Look at some of the basic concepts which we have already read, which all of us really understand. But again,
when a student goes to school, और एक बच्चा जब पहली बार first class में probably जब school जा रहा होता है, in that case also ऐसी expectation होती है that in home schooling he already knows a lot of those things. So similarly today also we will not go into too much into basics of it, but we'll probably go a little higher up and we'll look at the practical issues which we have around us, and probably क्या value addition है which we can look for in context of these three topics to our clients. So first of all, let's talk about what is export and import under GST. And all of us know that there is a definition of export and import which is given under the provisions of IGST Act. Now, because ये पूरा law supply of goods और supply of services के ऊपर dependent है, तो similarly export of goods का एक definition अलग है, export of services का definition अलग है, import of goods का definition अलग है, import of services का definition अलग है. And when you look at definition of export of goods, it matches the manner in which customs के अंदर export of goods का definition है, which is taking goods out of India to a place outside India. So the important thing to understand is that goods should be in India, and from India the goods are going outside India. And interestingly, there the definition of India comes into picture. What is the definition of India? But when you compare that with definition of services, the problem in the definition of export of services, the problem in case of services is because they are intangible in nature. Because वो intangible है, so it is very difficult to actually replicate the same definition in respect of export of services, and that is why there are 4 conditions जिसके fulfillment के ऊपर we can say that export of services has happened. And those conditions are that supplier should be in India, recipient should be outside India, the place of supply should be outside India. 2 more conditions: I should be receiving foreign currency in India, and the person to whom basically I'm giving services outside India, it should not be merely my own establishment, it should not be my branch office. Once these 4 conditions are satisfied, that service can be treated as an export of service. So the comparison, which very important comparison, is in case of export of goods, just to qualify something as export of goods, it is not mandatory that I should be receiving foreign currency in India. Whereas in case of export of services, it is a mandatory condition. If I go to mirror opposite of this, that is the import, the definition of import of goods, exact opposite of what is the definition of export, that is bringing goods into India from a place outside India. So goods should be outside India, outside the territorial definition of India which is there, and they should be coming into the definition of India which is there. When you compare that with import of services, because in export of services you have 4 conditions, import of services में 4 condition नहीं है. Only thing which is very important is supply should be outside India, recipient should be in India, and place of supply should be in India. So those 2 things which you saw there in export of services, uska mirror opposite you can see here. But the 2 additional conditions which are there in respect of export of services, that is bringing foreign currency to India. So in respect of import of services, there is no such condition that to qualify something as import of services, there should be payment of foreign currency. That's not the case. And even if my branch office sitting outside India is giving a service to me where I am sitting in India, still it will tantamount to import of services. So that's kind of a difference between the definition of export of services and import of services. Now, having said that, interestingly, up till now, we have only read the definitions of export of goods or export of services, import of goods and import of services. However, actually to bring it into TaxNet under GST, it is very important that we identify whether there is a supply and whether it is an interstate supply or intrastate supply. And there again, IGST Act ke provisions makes it very clear that in case of export of goods or services or supply of goods in course of import into territory of India, they shall be treated as interstate trade and commerce. So they, by deeming fiction, they have been treated as if it is an interstate trade and commerce. Now, interestingly, एक सवाल है जो from a logical point of view which can always come in is, how can a transaction which is taking place between 2 countries, where one country being India, can be treated as an interstate transaction? But the point is, इसको interstate कहने के पीछे का reason ये है because जो IGST की levy है, that is applicable in respect of interstate supplies of goods and services. So there has to be some meaning of this interstate supply of goods and services, and export and imports have to fit in there. Unless they fit in there, they will still remain outside the levy. So to bring them into levy, it was very important to call them as interstate a supply in course of trade and commerce.
And that is where when we read section 4 of the IGST Act, not in fact 4, we talk about 5, that's error. When we talk about section 5, it talks about levy. तो वो जब लेवी की बात करता है वो कहता है बेसिकली whatever interstate supplies are there, they shall be leviable to tax. All other conditions जो आप supply के context में समझते हैं. Now, interestingly, for our topic, which is import of goods, there is a proviso in the levy, and the proviso, the manner in which it is written, it does not only says कि उसका जो collection है वो customs के अंदर जाके होगा, but वो levy को भी customs में जाके shift कर देता है. Now, first point where I would like to have attention of all of you, which is very interesting point to understand. When you read 5.1, it says, subject to provision of subsection 2, there shall be levied a tax called integrated goods and services tax on all interstate supplies of goods or services of both. So there has to be an interstate supply of goods or services of both. Whereas जब आप proviso पढ़ते हैं इसका, so proviso says provided that integrated goods and services tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with provision of section 3 of the Customs Tariff Act 1975. Proviso में the word supply is missing. The word which is there in proviso is import of goods. और अभी हमने जो import की definition देखी वहां पे we realize any goods which are outside India and if you're bringing them into India, that is treated as import of goods. So one genuine question which generally arises is that for levy of IGST on import of goods, is it not necessary that first it should be a supply? And there is one understanding which says that because the levy is coming through customs, import के ऊपर, जरूरी नहीं है कि जो supply के parameters हैं, जो आप section 7 में scope of supply आपने CGST Act में देखा है, जहाँ पे consideration, business, goods, services, दो लोगों के बीच में transaction होने की जो बात है, even if all of those things are not there, but just because goods are coming from outside India to India, under the Customs Tariff Act, there can be a levy of IGST. That is one view. And that view comes because of the proviso to section 5, subsection 1 of the IGST Act. इसी को जब आप साथ में पढ़ते हैं Customs Tariff Act में, section 3, subsection 7, that also kind of uses the same language. It says any article which is imported into India, in addition, be liable to integrated tax at such rate and not exceeding 40% as basically leviable under section 5. And there also the word supply is missing. Now, ये fact एक और बार जाके confirm होता है when you read the definition of meaning called the word called input tax, because ultimately import हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है because हम CIRC की जो region वाले लोग हैं, we are in landlocked states. हमारे सारे states ऐसे हैं जहाँ पे there is no seashore. So technically, because majority of the import actually takes place through water transport. Because we do not have water transport here, so हमारे यहाँ पे जितने भी customs stations हैं, they are all inland customs stations which are called dry ports. So practically import की जो levy है उसके साथ हम daily basis के ऊपर basically we do not deal with it, but उसका input tax credit all of us really look at, and our clients whenever they import anything we look at the input tax credit. Interestingly, when you read definition of input tax under section 2 subsection 62 of the CGST Act, it says input tax in relation to a registered person means central tax, state tax, integrated tax, or union territory tax charged on any supply of goods or services of both. So up till now, it is absolutely fine. There has to be supply and somebody has to charge a tax. And then it says it includes integrated goods and services tax charged on import of goods. And again, here the word supply is missing. So kind of आप तीनों sections साथ में पढ़ते हैं. Proviso to 5.1, section 3 subsection 7 of the Customs Tariff Act, and section 2 subsection 62 of the CGST Act 2017. You realize तीनों जगह के ऊपर supply word missing है. So can there be a case where there is no supply and still there is a levy of IGST on import of goods? That's one understanding which comes in, and that's what some people understand. That's how it is written. However, the another view is, which is important that we should look at, कि क्या ये जानबूझकर लेजिस्लेचर ने वर्ड सप्लाई मिस किया और इंपोर्ट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सप्लाई ना होते हुए भी उसके ऊपर आईजीएसटी लग सकता है. So probably the another view is maybe the manner of drafting the law at some places there is some imprecision there. यहाँ पे कुछ जगहों के ऊपर जो intention है that is not coming out very clearly. Like for example, you read section 11 subsection 1 of the CGST Act जो exemption की बात करता है. And you realize they are not exempting a supply. They are saying they are exempting goods or services.
नाउ अगेन यहाँ पे टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे नहीं है, सप्लाई पे है, बट एग्जेम्पशन जब देते हैं तो वहां पे दे आर एग्जेम्प्टिंग ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर द वर्ड सप्लाई इज आल्सो मिसिंग देयर. When you read 12 subsection 1 of the CGST Act, जो time of supply in respect of goods के बारे में बात करता है, there they use the word liability to pay tax on goods. 13.1 जो time of supply services की बात करता है, they use the word liability to pay tax on services. Section 49 subsection 9 which talks about payment of tax, it talks about pay the tax on goods or services. In all these places you realize word supply is also missing there. So probably drafting could have been little better, but when you read all of these sections और यहाँ पर अगर supply missing है and then you try to find out the logic behind it, probably logic वहाँ पर fail हो जाता है. So one correct view of reading that is, even if somebody is importing anything, it should be a supply, and all the ingredients of supply which are referred in section 7 subsection 1, consideration, business and all those things, except for import of services, जहाँ पर already exception है कि even if it is not in course and furtherance of business, still in that case it shall be leviable to tax under GST. Exception to that, all import of goods otherwise if they have to be brought under the levy, even under 3 subsection 7, there has to be a supply transaction. From this, let's jump to zero rated supply, because both of them are interconnected. So up till now, basically what I'm trying to communicate is import of goods हो सकता है. One understanding says supply नहीं हो तो भी चलेगा, but probably I will not subscribe to that view and I will say no, supply would always be a mandatory condition in those cases. Okay, now we come to zero rated supply, and interestingly, probably people who do not deal with GST on day-to-day basis, when they will read the word zero rated supply, the logical mind will tell them zero rated supply means all those supplies would have zero rated tax. That means the rate of tax is zero on it. But again, that probably is not the right understanding of zero rated supply, because we have a meaning of zero rated supply under section 16 of the IGST Act. And again, that meaning is talks about zero rated supply means. It's a means definition which is there. That means वो zero rated supply को explain कर रहे हैं कि क्या है. So it is just like if my name is Yash. Why my name is Yash? Probably that's not the question which a lot of people can answer, or probably even my parents can't answer why they have kept my name as Yash. They like the name. Similarly, why export of goods and why supplies to SEZ are named as zero rated supply? They wanted to name it as zero rated supply. That's one view behind it. Can there be another view? Probably वो आप thought एक बार रोक सकते हैं. Maybe जब हम आगे बात करेंगे थोड़ा, हम इस thought को वापस लेके आ सकते हैं. So as of now, we have a meaning of the word called zero rated supply. And again, I would like all of you to stress upon again the word which is called as supply. It says means supply of goods or services namely. So again, this namely is there before supply of goods and services. That means they are saying certain supplies of goods and services which they are naming as export of goods or services, or again read the word which is important, supply of goods or services, or both, for authorized operations to SEZ developer or SEZ unit. Now what I'm trying to say, I'm sure आपने ये definition बहुत बार पढ़ी है. So there is nothing new probably which I am reading in the English language, it's same. But what I'm trying to pinpoint here is zero rated supply. जब बात करते हैं यहाँ पे, when they start with supply of goods and services, so first they are saying there has to be supply of goods and services. Then they're using the word namely. Now, when you try and find out what is the meaning of this word namely का मतलब क्या होता है, you will understand that in legal dictionaries, namely they would try to say that when they have written something, they are trying to bring out what is covered in this. क्या चीजें हैं जो covered है इसके अंदर, and first they are saying export of goods and services. Now again, the problem which comes is in respect of export of goods, the definition of export of goods is taking goods outside India, from India to a place outside India. And again that problem arises here by saying क्या यहाँ पे supply होने की requirement नहीं है. And इसका साथ में comparison मिल जाता है कि अगर supply word use करना ही था तो export के साथ में भी use कर लेते, because अब SEZ को हम supply कर रहे हैं तो वहां पे supply of goods and services word को use किया गया है. So can there be a case to say that I am exporting goods, I am taking goods from India to a place outside India, it is export of goods, and it will always be a zero rated supply. चाहे वो मैं सैंपल के लिए ले जा रहा हूँ, चाहे मैं वो गिफ्ट के लिए ले जा रहा हूँ, चाहे मैं वो टेस्टिंग पर्पस के लिए ले जा रहा हूँ, but will always be a zero rated supply.
This interpretation is important here because agar if we take this interpretation that anything which is going from India to a place outside India in respect of goods and it is zero rated supply, certainly I'm entitled to claim refund as per the provisions of the or rules which are there in rule 89, 90 and so on and so forth. Now, whether that logic holds good here, so let's take an example, and it's a practical example on the basis of which a lot of show cause notices have been issued in last 2 years. जिसके ऊपर government had to actually come out and bring a press release to make and understand what is the concept behind. So let's say I am sitting in India and there is some exhibition which is happening in Canada, and I am a person who is dealing in jewelry. In fact, the city from where I belong to, that is Jaipur, it's a hub of jewelry, right? So let's say I am sitting in India, Jaipur, and there is an exhibition which is happening in Canada. So what I'm doing is I am sending some goods from Jaipur to Canada to exhibit them in Canada. मैं वहाँ पे exhibit करूँगा, अगर माल बिकेगा, then I'll prepare a commercial invoice, sell it to the person there. Otherwise, I'll bring back the jewelry, whatever is not sold. So let's say I'm sending 100 pieces outside India, and 80 pieces are coming back, only 20 are sold there. Now there is a notification under customs 45/2017 of the customs. 45/2017 customs का notification ये कहता है कि अगर आपने कोई goods इंडिया के बाहर आप लेकर गए थे, जो एक्सपोर्ट है, जो इस केस में भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी का रिफंड क्लेम किया था, या अगर आपने एलयूटी में लेकर गए थे और आपने एलयूटी के रिस्पेक्ट में अगर अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम करा था, सो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग बैक दोस गुड्स इनटू इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उतनी इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत है जितने का आपने रिफंड क्लेम करा था. Meaning thereby, if I have not claimed the refund at the time of export, then in that case, I am not required to pay any tax at the time when I'm importing goods here. Now in 2017, when GST was absolutely new and fresh, और लोगों को पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं, so what people did, ये जो 100 पीसेस जयपुर से कनाडा जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक आईजीएसटी का इनवॉइस बनाया, they charged आईजीएसटी ऑन इट, और उन्होंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया. कस्टम्स ने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए, शिपिंग बिल फाइल हो गया, गुड्स वेंट आउटसाइड इंडिया. कुछ लोगों ने उसको अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखाया, कुछ लोगों ने जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाया. जिन्होंने जीएसटी रिटर्न में दिखाया उन्होंने वो आईजीएसटी पे भी करा आईटीसी के थ्रू और उनको ऑटोमेटिक रूट से रिफंड भी आ गया. जिन लोगों ने नहीं दिखाया, they only charge tax on the invoice, but at the end of it उसके अलावा they did not show it in the GST returns. शिपिंग बिल के अंदर आईजीएसटी लिखा था, तो जब गुड्स वापस आ रहे थे और all of them did not wanted to pay any tax at the time of import, उन सब ने बिल ऑफ एंट्री के अंदर जब वो गुड्स वापस आ रहे थे इंडिया में, they mentioned this notification 45/2017 and did not pay any IGST on the import. Subsequently, customs ने सब लोगों को शो कॉज नोटिस इशू करके बोला that because you are importing goods और आपने जब goods initially भेजे थे तो आपने IGST लगाया था, that means you had claimed refund of IGST at the time of export, so आपको compulsorily import के ऊपर आपको IGST पे करना पड़ेगा. At that point of time when this issue came into the horizon, first view which came was कि पहली बार जब goods इंडिया के बाहर भेजे थे, जो export तो था without doubt because goods were going from India to a place outside India, whether it was a supply or not, तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई तो बाद में बोलेंगे, पहले देखते हैं सप्लाई है या नहीं है. Then the custom said we do not care that is supply or not. अगर आपने इनवॉइस पे आईजीएसटी लगाया, it is very simple कि आपको आईजीएसटी का रिफंड मिलना ही है क्योंकि वो ऑटोमेटेड रूट है, so then you are duty bound to basically pay that now. Then government came with a press release on 19/7/2019, and there they wrote this very interesting thing. They wrote in the press release. They said activity of taking good out of India on consignment basis for exhibition would not in itself constitute a supply under GST since there is no consideration received at this time. And they said कि आप supply पढ़िए, supply में consideration involved है, जब आप exhibition के लिए लेके जा रहे हैं, so there is no consideration involved. The movement of these goods out of India shall be accompanied by delivery challan issued in accordance with provision contained in Rule 55 of the CGST rules. Since taking such goods out of India is not a supply, it necessarily follows that it is also not a zero-rated supply. Therefore, execution of bond or LUT as required under Section 16 of the IGST Act is not required. And that's what this press release said. So this press release kind of reinforced the thought by saying कि आप zero-rated supply की definition जब पढ़ते हैं, वहाँ पे सिर्फ export of goods को उन्होंने zero-rated supply बोला है.
बट दैट डज नॉट मीन कि वो जो ट्रांजेक्शन है अगर वो सप्लाई की स्कोप में फिट नहीं बैठ रहा है, स्टिल इट विल बिकम अ जीरो रेटेड सप्लाई. And that is why all the goods which are sent for sample purposes, for testing purposes, for exhibition purposes, which are temporarily taken out of India because they'll be coming back to India, or in fact let's say goods are being sent for rental purposes outside India, all of them is not export. Oh sorry, all of them is not a zero rated supply. It may be export, it is not a zero rated supply. And in all these cases, that person who is sending goods outside India, he is not required to prepare a tax invoice. If they are preparing a tax invoice, it is an incorrect practice. They cannot charge IGST on it. If they're charging IGST, because आपने invoice पे tax charge करा, आपको compulsorily pay करना पड़ेगा. But you are not entitled to refund under the provision of section 16. आप zero rated supply के context में उस पर refund लेने के लिए entitled नहीं है. उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं लगता था और आपने टैक्स पे कर दिया, इस कारण से आप जरूर रिफंड ले सकते हैं, पर उसके लिए प्रोसीजर डिफरेंट फॉलो करना पड़ेगा, नॉट द रेगुलर रूटीन प्रोसीजर व्हिच इज बीइंग फॉलोड, एंड दैट इज व्हाई दैट ऑल ऑफ दैट प्रैक्टिस इज इनकरेक्ट. सो द होल पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से हियर इज देयर हैज टू बी सप्लाई, देन जीरो रेटेड सप्लाई. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, बट उसको सप्लाई के फनल में लेके आना पड़ेगा अगर आपको उसको एक्चुअली जीरो रेटेड सप्लाई में लेके जाना है. Then one question comes up, zero rated पे भी tax नहीं है, exempted supply पे भी tax नहीं है. So that means zero rated supply and exempted supply are same. I think all of us know it by now. Both of them are absolutely not same. They are different. As I said, zero rated is just a name. So zero rated means actually only two types of supply: export of goods or services, or supplies to SEZ or SEZ developers for authorized operations. Whereas exempted supplies are all those which are basically covered by the definition of exempted supplies, which are not leviable to tax, or which have a nil rate of tax, or which are exempted by way of a notification, and they include non-taxable supply. Now, one question which is a very interesting question, probably जो courts में कुछ time में जाके जरूर test होगा, can one say that zero rated supply is a non-taxable supply? Because ultimately goods and services are going outside India. So because they are going outside India, ultimately government does not have power to levy tax on it. आप चाहे उसको कानून में interest rate supply क्यों ना बोल दें, but government does not have power to levy tax on it. There are a lot of precedents in this regard from the earlier regime, which talks about कि क्या government इसके अंदर अपना extra territorial jurisdiction invoke कर रही है. The answer is, can parliament whether parliament has power to basically make laws which are by invoking extraterritorial jurisdiction? They can do so. क्या इसमें extraterritorial jurisdiction invoke हो रहा है नहीं हो रहा, वो अपने आप में एक question of dispute है. But the bottom line is government do have power to basically levy tax in this regard. वो philosophically सही है गलत है, probably that is something which is to be decided at the policy level. But if you compare zero rated and exempted, अगर कोई ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर, लेट्स से उसके ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है, वो ऐसा आइटम है जिसके ऊपर गुड्स पे इफ यू सेल इन इंडिया यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स बिकॉज इट इज नील रेटेड. स्टिल इफ यू एक्सपोर्ट इट आउटसाइड इंडिया, इट टेक्स द कलर ऑफ ए जीरो रेट सप्लाई. और जितने बेनिफिट जीरो रेट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है, वो सारे बेनिफिट जीएसटी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. बिकॉज आई एम नॉट पेइंग टैक्स ऑन माय जीरो रेट सप्लाईज, because of it is covered in section 16, मुझे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है उसके रिस्पेक्ट में. मैं आउटपुट पे जरूर टैक्स नहीं दे रहा हूं, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ इट इज माय टैक्सेबल सप्लाईज अगेंस्ट व्हिच आई कैन क्लेम आईटीसी, एंड आई कैन गोइंग फॉरवर्ड मैं उस आईटीसी का रिफंड भी क्लेम कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन व्हिच प्रोसीजर आई एम फॉलोइंग. So I hope up till now all of us are very clear. Zero rate supply अलग है, exempted supply अलग है, दोनों के outward पे मैं tax pay नहीं कर रहा हूँ, but that cannot be criteria to say both of them are same. And zero rating is basically a benefit which is given by the government to me. और अगर कोई exempted supply कोई if I am exporting outside India, still it will be treated as a zero rate supply. Now with this we come to SEZs, and that is again quite an interesting concept which was brought in India in 2005. In fact, it was brought in India looking at India in 2005. We were India shining at that point of time. We were having a lot of business which we were doing outside India. Products from India, services from India were under huge demand. We were a country which we are still a country which has a lot of potential manpower. In some cases, we may not have the raw material. And their government thought of वो सारे लोग जो भारत में फॉरेन करेंसी लेके आने के इच्छुक हैं,
और उसके लिए बेसिकली दे आर लुकिंग ऑफ सम कंसेशंस, दे आर लुकिंग एट दैट प्रोबब्ली दे शुड बी गिवन सम एडिशनल एडवांटेज to accelerate this foreign trade. That is why these SEZs were set up way back in 2005. Conceptually, in a very plain and a simple language, if you look at SEZ, at least from an economic point of view, they are treated as a territory which is outside the custom territory of India. तो भारत में कस्टम टेरिटरी के अंदर अगर मान लीजिए कोई माल कस्टम टेरिटरी के बाहर से इंडिया में आ रहा है, सारे प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल है जो हमने अभी इंपोर्ट की बात करी थी. बट SEZ को और SEZ एक्ट को वहां पर एक पावर दिया गया, which is an overriding basically privilege which has been given to the SEZ act, where they say that this should be treated like a bonded warehouse. It's like a warehouse. So जैसे bonded warehouse होते हैं where you bring into India कुछ something into India, but जब तक आप उसको bonded warehouse से clear नहीं कराएंगे home consumption के लिए, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसने कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस करा. दैट मींस तब तक उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग सकती, तब तक उसका बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर कोई टैक्स का लेवी नहीं आ सकता. तो अगर कोई गुड्स SEZ एरिया के अंदर आ रहे हैं और SEZ में उसका इस्तेमाल होकर वापस यू आर यूजिंग दोस गुड्स और सर्विसेज एंड एक्सपोर्टिंग इट आउटसाइड इंडिया, then there are benefits given in terms of customs and other indirect taxes. Their units, they take a specific permission to set up there. They have to write what are the authorized operations. There is an SEZ commissionerate basically which gives the permission there. All of them are issued a letter of intent कि वो क्या activities है जो वहाँ पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो क्या चीजें inward लेके आ सकते हैं और क्या export कर सकते हैं. Trading is not possible in case of SEZ. Only manufacturing is possible. Only thing which they have to prove is they should have a positive net foreign exchange. मतलब वो जितना बाहर पेमेंट कर रहे हैं imports के लिए goods और services का, और जितना foreign currency इंडिया में लेके आ रहे हैं in respect of their export of goods and services, ultimately it has to be positive for a period of 5 years from the commencement of production. जब तक वो positive है तब तक their status is maintained. कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जिसको हम DTA ट्रांजेक्शन कहते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, दैट एरिया व्हिच इज इन इंडिया एंड आउटसाइड द SEZ एरिया, उनके साथ दे कैन अंडरटेक द ट्रांजेक्शन बट विद अ लिमिट रिस्ट्रिक्शन एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ वेरियस परमिशंस व्हिच दे हैव टू सी. Okay, and then obviously we know that they have certain income tax and indirect tax benefits. Income tax में एक already sunset clause है SEZ के respect में, जहाँ पे 2020 से पहले अगर आपने production start किया है, then only that 15 years of tax period is allowed. Now, first thing to understand, जब हम SEZ में बात करें उसके पहले ये finance bill जो था, now which is a Finance Act 2022, there was a proposal by the Honorable Finance Minister that this SEZ Act, which is not contemporary today, it is going to be replaced by a new act. And that is why you have already a bill in place, which is for the public discussion. That is the Development Enterprise and Services Hub Bill 2022. In short, बड़ा catchy सा name है देश. So DESH, which is actually Development Enterprise and Services Hub Bill 2022. And basically it will replace this SEZ Act 2005 once basically this will become an act. Basic ingredients and basic feature की अगर हम बात करें, so now the biggest problem in case of SEZ was specifically for the service providers, जहाँ पे एक specific area of land basically you have to buy. If somebody has to basically operate under SEZ, they have to buy a specific piece size of the land. Now, all the service suppliers who are exporting services outside India, they never needed that much bigger infrastructure. But the problem is that under the old SEZ Act, they did not have power to give away that the extra land which is there. ऐसा कोई provision नहीं था. So this is one of the features of this DESH is that they can basically free up the specific area which is not in demand. Then there is the concept of having a single window clearances for basically getting all the clearances and filing of all the returns and applications in this regard. Now, one of the biggest thing which basically when you first hand read this DESH bill, you realize कि यहाँ पे domestic market के साथ में भी कुछ काम किया जा सकता है by those units which will be within this hub. And कुछ contract manufacturing भी कर सकते हैं, मतलब you bringing goods into SEZ doing certain activities in them and again giving back to the DTA, obviously subject to what rules which comes in. So this is going to replace SEZ Act. Now maybe next 1 year to come, maybe next 2 years to come, but as of now हमारा GST Act IGST के provision specifically zero rate supplies के वो बोलते हैं कि आप जब SEZ unit को या SEZ developer को उसके authorized operations के लिए if you are supplying any goods or services,
sitting in a non-SEZ area, in a regular domestic tariff area to them, it is as good as basically you're exporting them, because whatever is going in SEZ, technically that is going outside the customs territory. So maybe theoretically it remains in India, but for the purpose of economic activities, it goes outside India. At some point of time, वहां से foreign currency India के अंदर आने वाला, and that is why वहां पे zero rating के benefit है, which is now going to be replaced by this development enterprise and services hub. It's a good practice for all those basically who are looking for new practice avenues. I think this is the right time. You can read this, you can suggest your clients. For all those clients who are in SEZ, how transition has to take place. For all those clients who are into exports and they were looking for certain benefits and whether they should basically opt for, because SEZ mein jana apne aap mein, it's a very difficult decision. It involves a lot of cost and basically change of place. But probably this bill, it looks like it has a lot of those things which are liberal as compared to the old SEZ Act. Anyways, coming back to the SEZ Act specifically, जिसके ऊपर अभी हमारा discussion है. Now, why SEZ is important to understand, और क्यों हमें SEZ Act के provisions के बारे में basic पता होना चाहिए. Basic इसलिए पता होना चाहिए because दो section है SEZ Act 2005 के अंदर, Section 7 and Section 51. Section 7 ये कहते हैं कि basically all the units and developers, as per the provisions of the SEZ Act, whatever goods and services they're exporting out of India or they're importing from India, from outside India to India, within that SEZ area, certain taxes hai jiska basically they would not be leviable there. So one becomes very interested to see कि क्या इस Section 7 के अंदर जो एक schedule attached है जो SEZ Act के साथ में, उसमें GST कहीं covered है क्या? And you realize there are 21 acts which are covered there, and it does not talk about any CGST Act, SGST Act, or your relevant state goods and services tax act. Any which way, because interstate supply है SEZ के respect में, तो CGST, SGST की applicability वैसे भी नहीं आती. But IGST is not covered here. So first thing, कुछ taxes का relaxation है SEZ के अंदर जो लगते ही नहीं है अगर transaction SEZ के साथ में है तो, but उसके अंदर GST is not part of it. However, still, even after that also, you have Section 51 under the SEZ Act. And what 51 says, 51 has an overriding effect, and this is very interesting. In fact, Section 51 SEZ Act का बहुत सारी जगहों के ऊपर, specifically in the old excise service tax regime, this section has come into picture. And this section has been used a lot of time by all these SEZ units to say कि हमें service tax, excise, in सब से we are not supposed to comply with them because we are into an SEZ area and we are bound by Section 51. What is Section 51 saying? It says provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therein contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law for a law other than this act. And when you read it, you realize somebody can argue by saying, because I have Section 51 and my mother provision is SEZ Act and I am an SEZ unit, मुझे GST में कोई registration लेने की जरूरत नहीं है. I am not bound to file GSTR 1, GSTR 3B. I am not bound to basically do unnecessary compliances because Section 51 gives me that power that is notwithstanding anything inconsistent there. But probably that may not be the correct view to look at it for a very simple reason that there is nothing which is inconsistent when you are complying with the GST provision. It's an additional compliance which you are required to take. जहां पर SEZ Act में अगर आपके पास में कोई relaxation available in terms of non-payment of taxes or maybe certain leeways, और अगर GST आपको additional compliance करने के लिए बोलता है, probably one can invoke at Section 51 there. But in my humble understanding, doing regular compliances, having a GST registration, one may not be able to take benefit of Section 51 and they have to really comply with it. Interesting concept तब आएगा जब हम बात करेंगे कि क्या SEZ unit कोई refund application file कर सकता है. So अगर आपके कोई क्लाइंट SEZ यूनिट है, उसने गलती से कभी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, और गलती से मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग ये है कि SEZ यूनिट को कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑल सप्लाईज टू इट आर जीरो रेटेड सप्लाईज, तो सप्लायर रिफंड क्लेम करेगा. But let's say your client is an SEZ unit and has claimed a refund and claimed a credit. Can it go ahead and file a refund application? That is something probably when we look at, you will come back to the Section 51 and see कि क्या SEZ Act में कोई restriction है या GST Act में या IGST Act में कोई restriction इसके respect में. Okay. Now, with this, we come to now some export promotional measures and schemes which are there in GST, customs and FTP.
I will not go into detail of all these schemes, that is not relevant. But what is the purpose of bringing it here? कि हम जब GST में refund के provisions के बारे में बात करें, उसके पहले हम ये समझे कि ultimately government का philosophy export की तरफ है क्या? Ultimately, because government wants, any government would like to have promotion of its export, because ultimately it brings foreign exchange into India or their respective countries. Okay, so we have customs, we have foreign trade policy, and we have provisions of IGST. Okay, let's try to read all of them together and let's try to see क्या हम कोई synergy पे पहुंच सकते हैं. And the first thing you realize is all these foreign trade policy provisions which are there, that foreign trade policy which is for a period of 5 years and government may extend it for a certain period of time. So we all of us know कि नई FTP due है and that FTP has to come. Now till the time it is not coming, the FTP 2015-20 it has been extended and it is right now under that extension phase. Now under FTP, what is the philosophy? Government, central government एक हाथ पे FTP पे क्या बोल रही है? And FTP में the philosophy for all the benefits which are there in the FTP for an exporter is that while somebody is exporting goods and services, taxes shall not be compelled to be exported. And that's very interesting concept here. Why? Because when we started, हमने ये बात करी that GST is a destination based consumption tax. हमने देखा वो चार्ट के थ्रू कि ये philosophy है जो philosophy throughout maintained रही है. तो अगर philosophy maintained है, that means अगर goods इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहे हैं, for example any country outside India, और अगर ये destination based consumption tax है, तो goods और services के साथ में क्या tax भी इंडिया के बाहर जाना चाहिए. And ultimately किसी गवर्नमेंट का पर्पस एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाने का नहीं है, बिकॉज वो एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं. And that's why they do not want to basically levy the tax because they want to make them competitive. Under FTP, all the provisions which are there, they are aimed at this concept only कि WTO guidelines के हिसाब से export basically should be zero rated, they should be tax free, so that there is a free flow of export which is happening between around the world. Okay, and that is why all export promotional measures or schemes which are there in India, they are either adhere to the above principle, जिस principle की हमने बात करी, या फिर WTO की guidelines के हिसाब से वो बनी हुई है, so that basically our export remains competitive. तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि डोमेस्टिक टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के साथ में एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए इंडिया के बाहर. ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स कम टू द स्पेसिफिक बेनिफिट्स व्हिच आर देयर. तो कस्टम्स और एफटीपी के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक स्कीम्स है, बेनिफिट है. एक हमने ऑलरेडी बात कर ली, एसईजेड सेटअप, एसईजेड बेसिकली क्रिएट करना, दैट स्पेसिफिक एरिया. एक डेवलपर होगा बेसिकली हु विल बेसिकली मैनेज, मेंटेन एंड क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज एसईजेड डेवलपर. एंड यूनिट्स होंगी जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, वहां से सर्विसेज सप्लाई करेंगे. वो सब लोग जो एसईजेड में नहीं जाना चाहते, एसईजेड के बाहर हैं, बट कोई गुड्स वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनको यूज करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जहां पे वो इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्सेस एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट. उनको गुड्स को यूज करके दे हैव टू प्रूव टू द गवर्नमेंट दे हैव यूज्ड दोस गुड्स, और वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वो इंपोर्ट पे कोई अननेसेसरी टैक्स से लोड नहीं हो, एंड एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट के ऊपर उनके ऊपर कोई लेवी नहीं है टैक्स. इसी का एक वेरिएशन इस स्कीम का विच इज कॉल्ड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जहां पर मेरे पास एक ऑथराइजेशन है, मैं कितने गुड्स इंपोर्ट कर सकता हूं साल में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सब्जेक्ट टू अगेन मैं उनको यूज करूं फॉर द पर्पस ऑफ माय एक्सपोर्ट. देन कैपिटल गुड्स आई कैन इंपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सब्जेक्ट टू मैं गवर्नमेंट को एक कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं इतना एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर लेके आऊंगा, विच इज कॉल्ड एज ईपीसीजी स्कीम. आई एम श्योर आप सबने इसके बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा. Then we have specific areas which are called 100% export oriented units. Up till 2009-10 they were quite, there are a lot of benefits. Over the period of time इसके benefits को थोड़ा wind down कर दिया गया. अभी भी एक specific unit है जिसके पास एक EOU status है. वो EOU status होने के कारण वो certain supplies जो करते हैं, उन supplies के ऊपर government ने benefit दे रखा है, और उनके certain procurements को government ने tax free कर रखा है, subject to certain conditions, procedures and declarations which they have to give. And then we have for service suppliers specific parks which is called as electronic hardware technology park, software technology park, biotechnology park. अगर इन सब का पर्पस देखेंगे मिला के, विदाउट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक्स, द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. इंश्योर की you're bringing goods and services into India, facilitating all these people not to pay any tax, सब्जेक्ट टू इन सबके यूजर्स कमिटमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि उन सब गुड्स और सर्विसेज को यूज करके वो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर लेके आएंगे थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और अगर वो एक कमिटमेंट पूरा कर पा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, then in that case उनको एक बेनिफिट है टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में प्लस सर्टेन क्लियरेंसेस के रिस्पेक्ट में.
इसी कॉन्सेप्ट को जब हम फर्दर आगे लेके जाते हैं, यू रियलाइज कि कुछ लोग प्रोबेबली जो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में इंपोर्टेड चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करते, ओनली डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं. Their government has this schemes of incentives called RODTP, which is refund of duties and taxation on export products. Recent scheme जिसने MEIS और SEIS को खत्म किया, जो पहले दो अलग अलग एक तरीके से इंसेंटिव चलते थे कि अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, then in that case government is basically giving you that incentive so that basically it boosts your exports. However, now we have this one refund of duties and taxes on exported products, which is RODTP. Okay. So this is for all who do not have to prove कि उन्होंने import के टाइम पे किसी तरीके के ड्यूटी को बेयर किया था या नहीं किया था, imported goods यूज करे थे या नहीं करे थे, but they are ultimately saying when basically I am bringing foreign currency to India, what Indian government can give me. So Indian government is basically saying you are entitled for certain benefits, take these benefits. इसी स्कीम के अंदर और इसी फिलॉसफी के साथ में when you read section 16 of the IGST Act, it talks about refund of what? Refund of GST. And why it talks about refunds of GST? It specifically talks about the refund of GST because for a very simple reason that, as I said earlier, the purpose is your export should always remain competitive and you do not want to export taxes along with the supply of goods and services outside India. तो रिफंड के दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि आप अपने आउटवर्ड के एक गवर्नमेंट को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आप गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी लेके आएंगे जहां जहां एप्लीकेबल है. अगेंस्ट दैट डू नॉट पे एनी टैक्स, कम हियर, एक्सप्लेन टू अस कि आपने इनपुट सर्विसेज यूज करे हैं, उसके अंदर एक फॉर्मूला को यूज करिए और उसके बेसिस पे वो अपनी इनवर्ड साइड पे जो आपने टैक्स पे करा उसका रिफंड ले लीजिए. सेकेंड, आप अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर आईजीएसटी का एक स्पेसिफिक फिगर बताइए कि आपके ऊपर अगर आप इंडिया में बेच रहे होते तो ये रेट ऑफ टैक्स लगता, आप ये टैक्स को अपनी इनपुट से या कैश से पे करिए और गवर्नमेंट को क्लेम लॉन्च करिए, गवर्नमेंट आपको वो रिफंड देगी. जहां ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल है वहां ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू रिफंड देगी, जहां ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, इन दोस केसेस दे विल बेसिकली आस्क यू टू फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन. सो यहां तक अगर आप पहुंचते हैं, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, क्यों मैं ये बैगेज लेके आ रहा हूं? अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे, वन वुड से दैट ऑल एक्सपोर्ट्स आर टैक्सेबल बिकॉज एक्सपोर्ट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई. सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में इंटरस्टेट के ऊपर टैक्स लगता है बिकॉज आईजीएसटी एक्ट में बोला है कि एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट मानेंगे. दैट इज व्हाई बिकॉज वो इंटरस्टेट मान लिया सरकार ने, उसके ऊपर वो टैक्स लगा रहे. और अगर मैंने टैक्स गलत लगाया, कम लगाया, नहीं लगाया, ज्यादा लगाया, इन ऑल दोस केसेस आई एम ड्यूटी बाउंड टू पे दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट और मुझे कोई रिफंड नहीं मिलेगा. दैट्स वन अंडरस्टैंडिंग. बट द सेकंड अंडरस्टैंडिंग इन द फिलॉसफी व्हिच कम्स इन इज, जब गवर्नमेंट एफटीपी के अंदर कह रही है कि टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, जब गवर्नमेंट कस्टम्स के अंदर इट इज गिविंग मी बेनिफिट्स, व्हेन देयर आर इंसेंटिव स्कीम्स अवेलेबल, when WTO guideline says that my export should be always be very competitive, then in that case ये जो मैं IGST लगा के एक्सपोर्ट करता हूं, जिसको हम टेक्निकल सिंपल भाषा में कहते हैं LUT नहीं है तो IGST लगा के एक्सपोर्ट कर रहा हूं, या मैं LUT जब लेता हूं तो ये जो सब चीजें मैं कर रहा हूं, whether there is a levy of tax or whether it is a mechanism to claim a refund. If one takes a view by saying it's a levy of tax, तब तो इस प्रोसीजर में हल्की सी भी अगर मैं गलती कर रहा हूं, then in that case मेरे पास कोई एस्केप रूट नहीं है, मुझे गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा. रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी पोजीशन. बट इफ ऑल ऑफ दिस अल्टीमेटली इज ओनली अ मैकेनिज्म टू क्लेम रिफंड, वेयर द गवर्नमेंट फिलॉसफी ऑफ नॉट एक्सपोर्टिंग टैक्सेस अलोंग विद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगर मैं प्रोसीजरली कहीं पर वीक भी हूं, या मुझसे कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, या मैंने टैक्स कम लगा दिया, या मैंने LUT लेट लिया, देन ऑल ऑफ देम आर प्रोसीजरल लैप्सेस, जिसके कारण से मेरे एक्सपोर्ट को अननेसेसरी टैक्स से बर्डन नहीं किया जा सकता. प्रॉब्ली व्हेन यू लुक ऑल ऑफ दिस प्रोविजंस टुगेदर, जो हमने सेकंड बात करी कि ये एक सब रिफंड लेने का एक तरीका है, दैट लुक्स अ बेटर प्रोपोजिशन, दैट लुक्स अ प्रोपोजिशन व्हिच सिंक्स विद द अदर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट्स हाउ बेसिकली वन शुड लुक एट इट. ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ व्हेन यू कम टू रिफंड, यू रियलाइज डे इन डे आउट जब हम रिफंड एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, they realize officers tell us that I am not entitled for the refund because of one silly mistake which has been done, and that silly mistake can be due to many various reasons. That is because मैंने LUT नहीं फाइल करा, मेरे इनवॉइस के अंदर टैक्स का रेट गलत हो गया, मेरा इनवॉइस नंबर मैच नहीं कर रहा मेरे दूसरे किसी डॉक्यूमेंट के साथ में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड अल्टीमेटली जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, आई एम मिसिंग समवेयर इन द लार्जर पर्सपेक्टिव. But having said that, we at least chartered accountant as practitioners, and because our first line of argument is not before any court,
We are not appearing before any court, but our first line of argument is before first the GST portal, जिसके साथ हमें communicate करना है, and after GST portal before the proper officer, जिसको मेरा refund process करना है. And in case he does not agree, then I'm basically going to the first appeal, which is the additional commissioner appeals. Again, a revenue officer. I can't expect that that person sitting in that chair will understand this concept instantly. कि वो पहली बार में मेरी चीज से agree कर जाएगा कि हाँ procedural lapse भी है तो कोई बात नहीं, आप refund के लिए entitled हैं. Probably all of us know on a practical ground it would not be possible. That is why it becomes very important that we are very thorough with the procedural aspect. We know what are the nitty-gritties and what are those areas where we can give value addition to the client. So when you come to refund, first of all, how that refund is available to all these exporters from the scheme of the law, 54(1) basically talks about any person claiming refund of any tax. And that's very interesting sentence. It says any person claiming refund of any tax, which is basically paid. So any person is the first word to understand. Any person means any person. They are not restricting it to an exporter or an importer or a company or an individual. They're saying any person. Now, if this any person can be a recipient also, I think the answer is yes. All of us know it. Agar मैं as a recipient of any goods and services tax pay करने जा रहा हूँ, I am very well entitled to claim that refund. I can do so. Then I come to explanation where there is a meaning of refund given under section 54 explanation. Again, that explanation which defines refund is a very exhaustive meaning. It says refund includes refund of tax paid on zero-rated supplies of goods and services or both. And please remember this sentence. I will come back to this sentence. And this sentence has a lot of value and lot of gravity. जिसको शायद हम सब लोग skip कर जाते हैं. It says refund includes refund of tax paid on zero-rated supply of goods and services or both, or on input or input services used in making such zero-rated supplies, or refund of tax on supply of goods regarded as deemed export, or refund of unutilized input tax credit provided under subsection 3. And there you realize it covers all kinds of basically transaction in respect of zero-rated supplies. Export, SEZ, it says आपने उस पे टैक्स लगाया zero-rated supply पे, उस पे रिफंड ले लो. आपने उसके अगेंस्ट में कोई ITC क्लेम करा, उस पे रिफंड ले लो. अगर आपने कोई डीम्ड एक्सपोर्ट करा है जो अल्टीमेटली आगे जाके फाइनली एक्सपोर्ट होने वाला है, उस पे भी आप रिफंड ले लो. ऑल ऑफ दैट इज आल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 54. कल को कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपको आके ये नहीं बोल सकता नहीं इसका रिफंड अलाउड नहीं होगा. सो दे हैव काइंड ऑफ एनविसाज एवरी पॉसिबिलिटी व्हिच इज देयर टू से कि आप इन सब के लिए रिफंड के लिए एंटाइटल्ड हो. So again, this explanation is quite important. Legislatively, intention wise, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में या सप्लाईज टू SEZ के रिस्पेक्ट में जिसको रिफंड के दायरे से बाहर रखा गया है या जिसको कोई सर्टेन कंडीशंस के साथ में अटैच किया गया कि ये रिफंड तब मिलेगा जब एक कंडीशन अटैच होगी. प्रोसीजरली रिफंड कैसे मिलेगा, उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हो सकती है, उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड हो सकते हैं, उसके साथ क्वांटम कितना होना चाहिए उसके ऊपर देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शन. But conceptually, आप refund के लिए entitled है या नहीं? I think this explanation explains it quite clearly to say that they are entitled for the refund. Now coming to an exporter who is exporting goods or services, what are two possible ways to claim a refund? And that's how I will basically address when somebody is exporting goods on payment of tax. He's basically not paying tax to the government on the export. He is basically claiming refund on that export by saying कि ये मेरा notional IGST का figure है which I am ready to pay to the government through my ITC or cash, and then you pay back that amount to me. Okay, so refund to exporter, it says export on payment of IGST. अगर मैं payment on IGST कर रहा हूँ और मैं उसका refund लेना चाहता हूँ तो फिर कुछ conditions attached हैं which I have to compulsorily follow. That's the procedural law which I have to really take care of. What are those things? मेरी इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर मैंने कभी आईजीएसटी का कोई बेनिफिट क्लेम नहीं किया जिसको हम रूल 96 सब रूल 10 कहते हैं. विल कम टू दैट रूल दैट बेसिकली आई शुड नॉट हैव रिसीव माय इनवर्ड्स ऑन अ सब्सिडाइज्ड आईजीएसटी रेट और विदाउट पेमेंट ऑफ एनी आईजीएसटी जहां पे लॉ में ऐसे इंस्टेंसेस है. देन इन दैट केस आई कैन फ्रीली बेसिकली शो द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी जिसका मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ. सेकेंड, मैंने कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे इनवर्ड सप्लाईज नहीं ली हूँ, लाइक जिसको हम कहते हैं 0.1% वाली इनवर्ड सप्लाईज नहीं हो मेरे पास में. And second and third, I should be able to bring back foreign currency into India within a specified period of time जो RBI ने FEMA के तहत रिकमेंड किया हुआ है या फिर RBI ने मुझे एक्सटेंशन दिया हो.
अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ जहां पे मैं ऑटोमेटिक रूट में नहीं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू बेसिकली गो एंड फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन, देन इन दैट केस व्हिच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स अंडर LUT, देन इन दैट केस three things which I have to take care of. First, I have to ensure that I bring foreign currency, बट ये फॉरेन करेंसी में सब्सिक्वेंट भी इंडिया में लेके आ सकता हूँ, मैं रिफंड पहले फाइल कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट करने के बाद में रिफंड में ला सकता हूँ, रिफंड आने के बाद आई हैव टू इंश्योर कि मेरा एक्सपोर्ट होने के सर्टेन टाइम के अंदर द मनी हैज कम बैक। सेकेंड, अगर मैं LUT में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ टू इंश्योर मेरे इनवॉइस बनाने के 3 महीने प्लस 15 डेज ग्रेस पीरियड मैं एक्सपोर्ट कर दूं, माय गुड शुड बी एबल टू लीव इंडिया। इफ दैट इज नॉट हैपनिंग देन I can't basically claim refund through this route. फिर मुझे IGST वाले रूट के थ्रू रिफंड लेना पड़ेगा. So that's another problem which I have. And third is जो which Akash was talking about in his initial remark कि रूल के अंदर एक चेंज करा गया रिफंड एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में. वो कहता है कि मेरे को एक प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ एक्सपोर्ट का उसकी जो वैल्यू है वो अबनॉर्मली हाई नहीं है मेरे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में. सो दिस वी विल डिस्कस दैट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट्स आल्सो वन ऑफ द कंडीशंस. तो अगर चार्ट वाइज देखिए सो प्रोबब्ली यू रियलाइज कि दोनों तरीके की जो मैकेनिज्म है उसमें अपनी अपनी कंडीशंस. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ IGST इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स. जो गुड्स के रिस्पेक्ट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस नो बेसिकली इन दिस केस that when I am claiming the refund, the refund is basically coming from custom authorities to me, and that's a very interesting concept. Refund GST का है, पर ये जो पैसा मेरे को देने वाले हैं वो मेरे को कस्टम अथॉरिटी दे रही है. बिकॉज मेरी रिटर्न में फाइल करता हूँ एंड देन माई रिफंड एप्लीकेशन इन दिस केस इज द शिपिंग बिल विच आई एम फाइलिंग बिफोर द कस्टम अथॉरिटीज. Because the rule says my shipping bill is a refund application, so my refund application is going before the customs. Because shipping bill customs में फाइल होता है, GST विभाग में फाइल नहीं होता है. और जब उनके पास में refund application है, they are only comparing that amount in the refund application with the data which I have punched in my GST returns. Once that matches, I am entitled to claim the refund. Obviously, that is possible only when there is an export general manifest which has been filed by the shipping line. So when goods are going outside India, there is an EGM that needs to be filed. Once that EGM has been filed, that means goods have left India and they have gone outside India. Export की जो definition है basic वो वहाँ पे satisfy होती है, and then I'm basically entitled to claim the refund. All of us know that details have to be punched in GSTR1 under a specific table. Akash did mention this point, which is a very important point. Procedurally, if I want to claim a refund hassle free, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना. I do not want to interact with any officer manually. I do not want my case to be explained to somebody, but I want it to be process driven but not person driven. Then in that case I should know process driven होने के लिए कौन सा table है specifically जिसके अंदर I am punching my details in respect of exports. Basically that's table 6A in respect of my GSTR1. And once I pay that amount which I am mentioning in my GSTR 6A with the amount of GST which is there in my GSTR 3B under that 3.1B column, then automatically I'm entitled for the refund. This procedure of Aadhaar authentication, I'm sure all of us know, it came a few some time back only, जहाँ पे Aadhaar authentication is mandatory. Now, what are the most common errors? Most common error की हम बात क्या कर रहे हैं? जो मैं अभी कह रहा था, because today's generation, and I think it's a very relevant thing to compare with. Probably generation of my father, if you would have told him that what is better, to talk over phone or to meet somebody in person, I'm sure he would have always said meeting somebody in person is always better. My generation, you will talk, if you ask me what is better, to talk over phone or to message somebody, probably I will say not talking over phone is better. I will always say message somebody is better. And probably the generation which will come after me, they will say nothing, no communication is better. Everything has to be very systematic, very SOP driven. I should not be able to basically tell anybody what he is supposed to do. He should know what he has to do, and everything should be determined by the standard operating procedures. ये जो रिफंड का प्रोसीजर है IGST पे करके रिफंड लेने का, इट इज ड्रिवन बाय द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. वेरी सिंपल. अगर मैंने एरर किया है तो एरर का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, दैट इज आल्सो क्लियर. सब्जेक्ट टू अगेन, मुझे झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ में, क्योंकि रिफंड तो मुझे मिलेगा जिसकी हम कॉन्सेप्चुअली और लीगली बात कर चुके हैं. बट इफ आई रियली वांट टू फॉलो द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल. इट सेज इफ योर शिपिंग बिल नंबर इज नॉट प्रॉपर इन योर GSTR1, जो आपको डालने की जरूरत है, you can go to your GSTR1 and amend it. Interesting thing,
अगर मुझे 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 की शिपिंग बिल नंबर और डेट के अमेंडमेंट में मुझे करने हैं, माय जीएसटी पोर्टल विल अलाउ मी, इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट मी। वो साल खत्म होने की 6 महीने तक करेक्शन करने वाली जो टाइम लिमिट है, उसमें शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट के ऊपर वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। एटलीस्ट जीएसटी पोर्टल इज काइंड एनफ दैट इट अलाउज यू टू मेक सर्टेन चेंजेस इन दैट रिगार्ड. There is an invoice number error in that case. If it is there in your GSTR1, then there is a problem. It has to be done within a specific time limit. That needs to be done on the GST portal. IGST amount का mismatch है, again time limit specific. Improper disclosure है value का, which is a very general mistake कि मेरे GSTR 3B के अंदर मुझे export में 3.1B के अंदर tax का figure दिखाना था IGST का, और मैंने 3.1A के अंदर दिखा दिया. I'm sure all those who deal with GST portal they know it कि जो मैचिंग होती है, टैक्स मैंने कितना 3B में पे करा और कितना मैंने 1 में दिखाया है, ये जो मैचिंग है इट इज ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस. तो ऐसा नहीं है कि इस महीने की 3B के फिगर को इस महीने के 1 से कंपेयर करेंगे. मेरा ओवरऑल जितना 3B के अंदर टैक्स पे करा है मैंने स्पेसिफिक 3.1B कॉलम में, उसको कंपेयर करा जाएगा मेरे ओवरऑल GSTR1 में मैंने एक्सपोर्ट के टैब में कितना टैक्स दिखाया. और अगर ओवरऑल बेसिस के ऊपर इट इज मैचिंग, माय रिफंड विल बी प्रोसेस सब्जेक्ट टू मेरे शिपिंग बिल के डिटेल्स मेरी GSTR1 की डिटेल्स के साथ में मैच हो रही है. If they are not matching, again, there is one more portal which comes into help, which is called as IceGate portal. I don't know how many of you have used that portal, but it's again a wonderful facility given by the government. DGFT की website है IceGate की, जहाँ पे जाइए, there is a specific login credentials for each exporter who has an IEC number, import export code, जिसके पास में भी he can have his own login. And whatever shipping bills basically is filing, the details of it are clearly available on that IceGate portal. You can go there, check the status of this refund. What is the problem in respect of the refund? क्यों refund नहीं आ रहा है? There are specific codes SB000 to SB006. SB000 means that there is no error. आपका रिटर्न का डेटा आपके शिपिंग बिल के डेटा के साथ में it has completely matched and you are entitled for the refund. There is no error at your side. Now it is a department or the revenue which has to ensure कि आपका रिफंड समय से रहते हुए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए. इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि कस्टम ऑफिसर को एक स्क्रोल जनरेट करना होता है. सो व्हेन ही जनरेट्स द स्क्रोल, बेसिकली व्हेन ही इंस्ट्रक्ट्स हिज सिस्टम कि ये रिफंड प्रोसेस होना चाहिए ओनली दोस केसेस जहां पे एरर कोड SB000 है उनके आइसगेट पोर्टल पे. उसके अलावा ऑल द एरर्स व्हिच आर देयर, SB001 जहां पे शिपिंग बिल डिटेल गलत है, लेट्स से मैंने मेरे जीएसटी रिटर्न में गलत डाली है, आई जस्ट एक्सप्लेन, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आई कैन करेक्ट दैट. SB002 जहां पे EGM डिटेल्स गलत है, सो EGM डिटेल्स जहां पे भी गलत है, जो बेसिकली द शिपिंग लाइन व्हिच हैव फाइल्ड द डिटेल्स देयर, वहां पे कस्टम पोर्ट पे जाके दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. जहां पे जीएसटी नंबर गलत है, देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज एक बार अगर EGM जनरेट हो जाता है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वंस इट इज जनरेटेड, अगर मेरी शिपिंग बिल के अंदर मेरा जीएसटी नंबर गलत डला हुआ है व्हाट एवर रीजन, then I can't get the shipping bill amended. वो shipping bill amend नहीं हो सकता because customs के system में जाके वो lock हो जाता है, that gets locked there, and there you have to get it manually processed through the assistant commissioner or the deputy commissioner located at the concerned port. तो आपका जो भी पोर्ट है, अगर वो ड्राई पोर्ट है, जो हम सब के केस में मेजोरिटी केसेस में हमारे लोकल एरियाज में ड्राई पोर्ट होगा, वो ड्राई पोर्ट के एसी के पास जाके अगर वहां से एक्सपोर्ट हुआ है तो, और अगर वेट पोर्ट से एक्सपोर्ट हुआ है लाइक नावा शिवा मुंद्रा एंड ऑल दोस प्लेसेस, देयर द एप्लीकेशन और द रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड टू द असिस्टेंट कमिश्नर देयर. SB005, I would like to take a moment here to tell it's quite interesting and important. क्यों important है? Because invalid invoice number एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रोबेबली जीएसटी आने से पहले इतना रेलेवेंट नहीं था, और हम सब लोग जानते हैं कि हम रिकॉर्डिंग कैसे करते थे. तो पहले जीएसटी आने से पहले एक कमर्शियल इनवॉइस बनता था, बट जीएसटी आने के बाद एक टैक्स इनवॉइस अलग बनने लगा, कमर्शियल इनवॉइस अलग बनने लगा. कमर्शियल इनवॉइस फॉर कस्टम पर्पसेस, टैक्स इनवॉइस फॉर जीएसटी पर्पसेस. पीपल हु आर स्मार्ट एनफ, उन्होंने इन दोनों की सीरीज को सेम रखा. पीपल हु थॉट इट विल बी कन्वीनियंट, उन्होंने सीरीज को अलग अलग रखा. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन समबडी इज क्लेमिंग अ रिफंड, देयर टैक्स इनवॉइस की मैचिंग होती है आपके GSTR1 के टैक्स इनवॉइस नंबर के साथ. Whereas मेजॉरिटी केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट में जो सेल रिकॉर्ड होती है वो होती है कमर्शियल इनवॉइस के नंबर के साथ में. एंड देयर दिस कंफ्यूजन ऑफ टैक्स इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, दिस नंबर ऑन द शिपिंग बिल, दैट नंबर ऑन द शिपिंग बिल, अल्टीमेटली उससे रिफंड गेट स्टक. That is why as a chartered accountant, because this I think probably except a chartered accountant nobody can actually make this understand to the client properly.
it is very important to have your tax invoice and commercial invoice aligned together. एक ही सिंगल सीरीज होनी बड़ी जरूरी है. इस सिंगल सीरीज का नुकसान भी है जब हम ई इनवॉइसिंग की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बट they should be single, because once your shipping bill EGM has been again let's say generated, और अगर उसमें invoice number गलत है, then it is very difficult to get it changed. Practically that shipping bill can't be amended. And there in all those cases एक concept होता है which is called as a concatenate table, जहाँ पे एक table है which you have to manually file before the assistant commissioner again of the port. Per shipping bill there is a 1,000 rupee fee which you have to pay to that officer, official fee, and there then you are entitled to basically get the corrections done. So that's one possible way to look at it agar you want to get the correction, but that's a very tedious process. Okay, now let's link this with e-invoicing. और e-invoicing आने से conceptually कैसे difficult हो गया. Let me throw some dates and tell you कि कैसे हमारे accounting concept और GST concept को साथ में mix करना जरूरी है. So let's say I have received an order of export somewhere in the month of December 2021 और मैंने production start करा उसका February 2022 के अंदर. Let's say मेरे को customer से approval आया कि मैंने invoice generate करा on 10th of February 2022. Now somebody will tell me कि February में invoice कैसे generate करा जब आपने production 1-2-2022 को शुरू करा. And that's how typically in any exporter would work. जो order based काम करते हैं और जिनके customer are huge customers, there they want कि जो इनवॉइस नंबर है, जो इनवॉइस नंबर सप्लायर अपना डालने वाला है जो शिपिंग बिल में होगा और जिसके बेसिस पे पेमेंट रेमिट करा जाएगा, वो इनवॉइस नंबर लॉक हो जाए, सो दैट दे आर आल्सो वेरी क्लियर, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स एवरीथिंग टू बी सिस्टम ड्रिवन. तो बिकॉज उनको इनवॉइस नंबर चाहिए होता है तो एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है. एंड बिकॉज नाउ इन जीएसटी द प्रॉब्लम इज यू कैन जनरेट एन इनवॉइस इफ ई-इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन यू. तो आप ऐसा नहीं कर सकते इनवॉइस आज जनरेट करें उसका आईआरएन आप लेट्स से 2 महीने बाद जनरेट करें. उसने इनवॉइस जनरेट करा फरवरी 2022 के अंदर, लेट्स से 10th of February. कस्टमर ने अप्रूवल दिया कि नाउ योर गुड्स आर एब्सोल्युटली रेडी, सब चीजें ठीक है और आप कस्टमर हैज गिवन द अप्रूवल. सडनली कस्टमर सेड कि नहीं अभी डिस्पैच मत करो, मैं बताऊंगा कब डिस्पैच करना है, आई डू नॉट वांट टू टेक द डिलीवरी राइट नाउ. कस्टमर ने मई में बोला कि अब आप रिमूव कर सकते हो, असेसिंग ने मई में जाके माल निकाला, शिपिंग बिल बना 29 मई को. बिल ऑफ लेडिंग एक्चुअली दैट डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एएस के हिसाब से मानते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, और मैंने सेल रिकॉर्ड करा ऑन 2nd of June 2022. एंड वंस आई हैव रिकॉर्डेड द सेल ऑन 2nd of June 2022, देयर नाउ आई एम सेइंग कि अब मेरी सेल तो 2nd जून की है, बट मेरा इनवॉइस जो है फरवरी 2022 का है. अब अगर ये आईजीएसटी वाला इनवॉइस है, तो प्रॉब्लम इज मुझे वो आईजीएसटी लॉ के हिसाब से मेरी फरवरी की जीएसटीआर 1 में दिखाना है, 3B में भी मुझे फरवरी में पे करना है, पर रिफंड में तभी ले पाऊंगा जब तक मेरा ईजीएम जनरेट नहीं होगा. एंड ईजीएम विल ओनली गेट जनरेटेड आफ्टर 2nd of June 2022. अगर ये एलयूटी वाली सेल है तो एलयूटी वाली सेल में प्रॉब्लम ये है कि इनवॉइस बनाने के 3 months के अंदर अगर गुड्स आर नॉट लीविंग इंडिया plus 15 days grace period, if goods are not leaving India then there is a problem. Suddenly then law says कि आप उसको एक्सपोर्ट को एलयूटी में नहीं कर सकते, आप आईजीएसटी लगाइए, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करिए, और जिस दिन आपका ईजीएम जनरेट हो जाए उस दिन आप इस आईजीएसटी का रिफंड ले लीजिए. So the point is this GST law, it now gives lot of importance to the document, and in fact document is that pivotal point fulcrum जिसके आसपास बाकी सब चीजें घूमती है. हमारा रिस्क रिवॉर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से कि बिल ऑफ लेडिंग कब जनरेट हो, और मेरे बिल ऑफ लेडिंग और इनवॉइस की डेट में अगर गैप है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. द सॉल्यूशन टू दैट इज नाउ ऑल ऑफ देम हैव टू टेल देयर कस्टमर्स कि हम जो डॉक्यूमेंट लॉक करा रहे हैं दैट डॉक्यूमेंट इज ओनली एन ऑर्डर नंबर. सो माय टैक्स इनवॉइस गोइंग फॉरवर्ड विल आल्सो हैव एन ऑर्डर नंबर, बट आई विल जनरेट माय टैक्स इनवॉइस ओनली सब्सिक्वेंटली, only when I am removing the goods. उसके पहले मैं नहीं बनाऊंगा. लॉफुली मैं बना सकता हूं, but once I am doing that, मेरे वर्किंग कैपिटल को मैं unnecessary ब्लॉक कर रहा हूं. That's a problem. Now with this I come to 9610, very interesting rule, and in fact because of this rule DGGST has issued lot of show cause notices and they are doing investigations across India. What is this rule जिसके बारे में हमने बात करी? Basically it says that if at the time of my inward जो मैं माल खरीद रहा हूं उसके ऊपर अगर मैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर मैं जीएसटी बिना पे करे या जीएसटी कम रेट से पे करे हुए अगर मैं इनवर्ड ले रहा हूं और मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं, देन इन दैट केस मैं आईजीएसटी लगा के रिफंड नहीं ले सकता. मैं आईजीएसटी लगा के एक्सपोर्ट कर सकता हूं पर मैं रिफंड नहीं ले सकता. तो इट बेसिकली मेक्स नो सेंस कि मैं आईजीएसटी लगाऊं पर मैं रिफंड नहीं ले सकता. दैट मींस प्रैक्टिकली दे आर सेइंग कि अगर आप इन 4 केसेस में फॉल करते हैं
तो आप इन्वर्ट तो करेंगे, पर आपका एक्सपोर्ट जो है वो एलयूटी में होना कंपलसरी। व्हाट इज दैट? फर्स्ट, अगर आपने बेसिकली यू हैव लेट्स से रिसीव गुड्स फ्रॉम एन ईओयू यूनिट, वो ईओयू यूनिट जिसने इन्वर्ट करा था और आपको वो जो गुड्स दे रहा है दैट इज अंडर 78/2017। ओके, सो इनफैक्ट 78 में अगर ईओयू यूनिट कोई डायरेक्टली गुड्स ले रही है विदाउट पेइंग ऑफ एनी टैक्स, देन दे कांट एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। सेकेंड, अगर मैं एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर हूं, मैंने इंपोर्ट करा है और उन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है कि मैं कोई आईजीएसटी पे नहीं करूंगा, then in that case मैं export IGST लगा के नहीं कर सकता हूं। This advance authorization is actually the biggest problem because हम सब लोग जो कस्टम्स में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और स्पेसिफिकली हम जो लैंड लॉक एरियाज में हैं, प्रॉब्ली वो एरिया है जो हम स्किप कर जाते हैं। और वो बहुत सारे लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया और कुछ इंपोर्टेड मटेरियल यूज करते हैं, इनवेरिएबली सम टाइम और द अदर दे वुड बी यूजिंग दिस एडवांस ऑथराइजेशन। सो इंपोर्ट करा, गलती से उस पर आईजीएसटी पे नहीं करा, और गलती से क्या out of no knowledge they did not pay IGST on the import and they have made export on payment of IGST, और automatic refund आ गया because assessee does not have to do anything to claim that refund. या फिर I have basically procured goods from somebody who is basically doing deemed export. So deemed export का एक specific section है जहाँ पे certain supplies notify कर रखे deemed export। तो मैं supplier हूँ, मैं आपको जो goods दे रहा हूँ वो deemed export में covered है, मैंने मेरे इनवॉइस पे आईजीएसटी लगाया है, बट वो आईजीएसटी मैं आपको बोल रहा हूँ आप मत पे करिए, मैं पे करके गवर्नमेंट से रिफंड ले लेता हूँ, बस मेरे एक्सपोर्ट को डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो आपने जब मुझसे माल खरीदा, मेरे इनवॉइस पे टैक्स तो लगा हुआ है, बट आपने वो टैक्स का मुझे पेमेंट नहीं करा, ना आपने उसका इनपुट क्रेडिट लिया। देयर इन दैट केस अगर आप उस माल को यूज करके एक्सपोर्ट करने वाले, then you can't basically export on payment of IGST. या फिर third, which basically Akash also talked about, that is merchant export, where I am supplying goods to you at a very subsidized rate of 0.1% of IGST or 0.05% of CGST and 0.05% of SGST, depending upon क्या nature of supply है। आप उन गुड्स को ले रहे हैं यूज करके, and then you're exporting outside India. In all these cases, Rule 9610 says you can't export on payment of IGST. आगे के लिए तो ठीक है for people who are aware of this. Although what will happen to all those people जो actually import कर चुके हैं या खरीद चुके हैं और IGST पे नहीं किया है और एक्सपोर्ट पे रिफंड ले चुके हैं, क्या वो रिफंड वापस देना पड़ेगा? गवर्नमेंट उसको रिकलेक्ट कैसे करेगी? So for this, government brought a retrospective amendment in the rule on 23/2020, जहां उन्होंने बोला अगर आपने अपने इनवर्ड के ऊपर सब्सिक्वेंटली भी आईजीएसटी पे कर दिया, तब हम ये मानेंगे कि आपने चारों नोटिफिकेशंस का बेनिफिट नहीं लिया है, और आपने चारों का बेनिफिट नहीं लिया, तब इन दैट केस आपके एक्सपोर्ट के ऊपर हम आपसे पैसा वापस नहीं मांगेंगे। मीनिंग देयर बाय, अगर मैंने इंपोर्ट किया था इनिशियली और आईजीएसटी पे नहीं करा, सब्सिक्वेंटली अगर मैं मेरा बिल ऑफ एंट्री रीअसेस करा के आईजीएसटी पे कर देता हूं अलोंग विद इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप एक्सपोर्ट जो आपने करा है एब्सोल्युटली वैलिड है, आप अपने इंपोर्ट पे देख लीजिए आपको इनपुट लेना है या नहीं लेना। या सप्लायर जिसने मुझे 0.1% पे दिया था, अगर वो मुझे डेबिट नोट देने को तैयार है एडिशनल अमाउंट का, एंड आई पे टैक्स टू हिम एंड ही pays tax to the government, then in that case there is no problem on the export which you have done, which is on payment of tax. Now issue क्या है इसके अंदर? One very interesting issue is, ये सब लोग जो अब subsequently import के ऊपर IGST पे करेंगे पिछले 3-4 सालों का, because DGGST has started issuing notices on the basis of data which is available from customs. उन सब केसेस के अंदर तो पहला क्वेश्चन which comes is, क्या उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? वो सब टैक्स वो इनवर्ड के ऊपर पे कर रहे हैं। कुछ केसेस में बिल ऑफ एंट्री रीअसेस हो पाएगी, कुछ केसेस में बिल ऑफ एंट्री रीअसेस नहीं हो पाएगी। वहां पर there is an old tribunal judgment under the excise regime of Steel Authority of India. That judgment says, अगर आप एक्साइज कस्टम्स में जो TR6 चालान जमा करा रहे और वो चालान के ऊपर अगर आपका बिल ऑफ एंट्री का नंबर लिखा हुआ है, it becomes part and parcel of your bill of entry and you're entitled to claim the SENVAT credit of CVD. Same concept we can borrow in GST, and we can say if I am just paying a challan to the customs along with interest, and in that challan my bill of entry number is written, then in that case I'm entitled to claim the credit. Provisions of 16(4 जो time limit है credit लेने के लिए, those will not be applicable here in this case, for a very simple reason to say that 16(4 is applicable on an invoice or a debit note, और ये जो credit है वो bill of entry के ऊपर credit है. So that is one way, pay all the taxes on the inward side, pay interest to the government if applicable, and claim that credit, और आपका refund जो IGST का वो valid है. There is recent another judgment from Gujarat High Court, and a very interesting judgment of I-Tech Plast India Private Limited.
दिस जजमेंट सेज वो असेसी जिसने इनवर्ड के टाइम पे आईजीएसटी का बेनिफिट ले लिया था और टैक्स पे नहीं करा, सब्सिक्वेंटली आईजीएसटी लगाकर एक्सपोर्ट करा, जब डिपार्टमेंट ने उसको बोला कि आपने रूल 9610 का वायलेशन करा है, उसने तुरंत अपना रिफंड वापस दे दिया। उसने इनवर्ड पे कोई टैक्स पे नहीं करा, पर उसने अपना रिफंड वापस दे दिया गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ में। देन गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस कि वो उसके अमाउंट को रिक्रेडिट नहीं करे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। एंड दिस काइंड ऑफ ब्रिंग्स बैक द ओल्ड फिलॉसफी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहती। दे सेड कि ठीक है उसने एक्सपोर्ट करा, रिफंड जो लिया वो रिफंड प्रोसीजरली गलत था, बट प्रोसीजरली गलत था, जब वो रिफंड उसने वापस दे दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर इतना पैसा वापस डालना जरूरी है एंड कोर्ट ऑर्डर की 2 वीक के अंदर वो पैसा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में डाल देना चाहिए। So I think that's a very relevant judgment. We have both the judgment. अगर आप इनवर्ड साइड पे टैक्स पे करते हैं, क्लेम द क्रेडिट, अगर आप आउटवर्ड का जो आपने रिफंड लिया था वो गवर्नमेंट को वापस देते हैं ब्याज के साथ में, यू कैन आस्क द डिपार्टमेंट टू एक्चुअली रिक्रेडिट दैट अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाई कोर्ट जजमेंट व्हिच इज देयर. Then a very interesting point, interest on delayed refund. And what is the interest on delayed refund? I think ये एक वो चीज है जो वैल्यू एडिशन की है. I kind of keep saying this in lot of seminars wherever basically I'm speaking on refund, that this is one area which probably all of us have kind of missed out or we have not explained to the client. What is this? एक सुप्रीम कोर्ट का recent judgment है 2022 का, somewhere of the April 2022, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया डिपार्टमेंट के फेवर में, बट अल्टीमेटली दैट डिसीजन इज इन assessee's फेवर. what was the जजमेंट सिर्फ इतनी सी चीज के ऊपर था. डिपार्टमेंट ने बोला कि डिलेड इन रिफंड के केस में जहां पे हमने एसएससी को आईजीएसटी का रिफंड एक्सपोर्ट के ऊपर डिलेड दिया है, वो रिफंड जो कस्टम्स के थ्रू ऑटोमेटिक आना चाहिए, वहां पे अगर हमारा कोई डिले है, देन इन दैट केस रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 6% बट नॉट 9%. इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट था 2019 का, जो ये कहता था वो एसएससी जिसने शिपिंग बिल में टैक्स दिखाया, अपना जीएसटीआर 1 टाइमली भरा, जीएसटीआर 3 भी टाइमली भरा, डेटा एग्जैक्टली मैच हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम, और वो रिफंड एसएससी को 90% रिफंड 7 डेज में नहीं मिला, और बैलेंस जो रिफंड था वो 60 डेज में अगर उसके रिफंड प्रोसेस होने से नहीं मिलता है, देन इन दैट केस ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, ओ सॉरी 9%. डिपार्टमेंट वेंट इनटू अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने बोला इंटरेस्ट मिलना तो चाहिए पर 6% की रेट से मिलना चाहिए, मतलब 6 + 6 12% की रेट से मिलना चाहिए. नो, आई एम सॉरी, नॉट 6 + 6 बिकॉज इट इज अंडर आईजीएसटी, इट इज ओनली 6%, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. The Honorable Supreme Court said that yes, assessor is entitled for the refund, not at the rate of 9%, but at the rate of 6%. What is the issue in this? Issue in this is ये refund automatic तो आता नहीं है, इसके लिए application लगानी पड़ती है. Application कहाँ लगेगी? आपके CGST ऑफिसर के आगे, SGST ऑफिसर के आगे या कस्टम्स के आगे? And answer to that is because ये सारे रिफंड के केस में आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर या आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिफंड इज कस्टम्स. इसका रिफंड एप्लीकेशन लगेगा कस्टम्स के आगे मैनुअली बिफोर द कंसर्न पोर्ट ऑफिसर एसी और डीसी जहां से एक्सपोर्ट हुआ है. सो दैट्स एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड बिफोर द कस्टम्स ऑफिसर. क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है रिफंड एप्लीकेशन लगाने के? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस. देयर इज नो टाइम लिमिट बिकॉज ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 नहीं है, ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 56 है. 56 के अंदर देयर इज नो टाइम लिमिट एप्लीकेबल फॉर क्लेमिंग दैट इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफंड. तो अगर आप किसी क्लाइंट को 17, 18, 19, 20, 21, 22 किसी का भी रिफंड है जो डिलेड आया है, 90% रिफंड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सब्जेक्ट टू एवरीथिंग वाज करेक्ट एंड balance in not in 60 days, then they're entitled to file an application before the concerned customs officer and they can claim an interest at the rate of 6%. That's a good thing to do. Now, refund in case of deemed exports, I think I will touch this in brief and then we'll go to another few issues, and then if there are any questions, I'll be very happy to take those questions. So refund in case of deemed export. What are deemed exports first of all? So deemed export, as I said, section 147 के अंदर defined है. वो export जो zero rated नहीं है, मतलब in this case when the supply is happening, goods are not leaving India. तो पहले तो दो लोगों के बीच का ट्रांजेक्शन है, दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन में goods are only remaining in India. पैसा जो है इसका वो फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आता है, INR के अंदर पैसा आता है, and such goods are manufactured in India. और वो manufactured goods जो इंडिया में, they have been notified by the government to be treated as a deemed export. In all these cases, in case of deemed exports, supplier can claim the refund. बाकी सब जीरो रेट सप्लाईज के केस में क्या है, अगर मैं सप्लायर हूं और मैं आपको दे रहा हूं गुड्स और आप उसकी बेसिस पे एक्सपोर्ट करने वाले इंडिया के बाहर,
you will go and claim the refund from the government in respect of unutilized input tax credit. But in case of deemed export, as a supplier, I can claim the refund. What are those supplies? अगर मेरे पास एक एडवांस ऑथराइजेशन एंड आई एम गिविंग इट टू यू, मतलब मैंने गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले रखा है कि मैं गुड्स इंपोर्ट कर सकता हूँ, आई विल यूज देम इन एक्सपोर्ट, बट मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि ये माल मैं ऐसे आदमी को दे रहा हूँ जो कमिट करके एक्सपोर्ट करने वाला है और वो इंसान आप है, तो मैं जो आपको माल सप्लाई कर रहा हूँ दैट इज अंडर एन एडवांस ऑथराइजेशन, दैट इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट बाय मी टू यू. इन दैट केस मैं मेरे ट्रांजेक्शन पे टैक्स तो चार्ज करूंगा. If you want, you may decide not to pay the tax to me. आप मुझे वो टैक्स का पेमेंट मत करिए, and I can go and claim refund of that tax from the government. या फिर अगर मैंने EPCG स्कीम के अंदर कोई कैपिटल कुछ इंपोर्ट करे और वो मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर बेसिकली all those goods which are given by export EOU unit, sorry, by a person to a 100% EOU unit. All these cases are cases of a deemed export. इन सब केसेस में सप्लायर जाके रिफंड क्लेम फाइल कर सकता है. However, अगर सप्लायर रिफंड क्लेम फाइल नहीं करता है और रिसिपिएंट वो टैक्स का पेमेंट करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है, देन इन दैट केस बिकम्स एन एब्सोल्यूट नॉर्मल ट्रांजैक्शन, नो डीम्ड एक्सपोर्ट, और रिसिपिएंट नॉर्मल कोर्स में उसका रिफंड क्लेम जाके कर सकता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो बार इन दैट रिगार्ड. ओके, now we come to exports under LUT. अब तक we were talking about IGST. When you talk about LUT, letter of undertaking, I'm sure हम सब जानते हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में एक फैसिलिटी है कि मैं चाहूँ तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ by basically giving a letter of undertaking to the government, and then in that case I can claim refund of my unutilized input tax credit because मेरे outward के ऊपर I'm not paying any tax because it's zero rate supply है और ये exempted नहीं है, यहाँ पे zero rating का benefit है. I can file a manual refund application. One thing to be really taken care of is all those people who are basically making export under LUT. You have to ensure अगर वो goods का export कर रहे हैं LUT के अंदर, invoice बनाने की 3 months plus 15 days में they have to ensure that goods are going outside India. And in case of services, within expiry of 1 year from the date of preparing the invoice, they are receiving the foreign currency to India. Services के केस में the concept of foreign currency is very important. कुछ के केस में फॉरेन करेंसी इंपॉर्टेंट है अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो. सर्विसेज के केस में वो एक्सपोर्ट माना ही तभी जाएगा जब वन ऑफ द कंडीशंस इज दैट यू हैव रिसीव्ड द फॉरेन एक्सचेंज. सो दैट्स टू एस्पेक्ट्स टू दिस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई एम नॉट क्लेमिंग रिफंड अंडर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ आई एम नॉट ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी टू इंडिया. बाकी किसी और एक्ट में इंप्लीकेशन हो सकता है, फेमा के अंदर, कस्टम्स के अंदर, बट जीएसटी एक्ट में कोई इंप्लीकेशन नहीं है, अब आईजीएसटी में कोई इंप्लीकेशन नहीं है. बट सर्विसेज के केस में सर्विसेज का एक्सपोर्ट माना ही तभी जाएगा जब इनवॉइस बनने के 1 साल के अंदर अंदर विद इन दैट पीरियड बेसिकली आई एम रिसीविंग द फॉरेन करेंसी टू इंडिया. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई एम नॉट अप्लाइंग LUT और देयर इज अ डिले इन अप्लाइंग LUT? There is a circular number 37 of 2018 which clearly says it's a procedural requirement. अगर ये डिले भी है तो डिले को कंडोन किया जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने LUT अप्लाई नहीं किया तो मुझे कोई कंडोनेशन का एप्लीकेशन फाइल करना है, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपका क्लाइंट कोई LUT लगाने में लेट हो गया और उसने एक्सपोर्ट बाय चांस LUT में कर दिया है, he files LUT online. अगर सेम फाइनेंशियल ईयर की है, अगर अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के, he should write a letter to the government by saying that he is manually applying for LUT because GST portal is not allowing it. और ये सर्कुलर 37 का रेफरेंस दे कैन गिव. जस्ट बिकॉज LUT इज नॉट देयर दैट डज नॉट मीन कि उसका एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली IGST वाला एक्सपोर्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट टू उसने LUT की बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया हुआ है. Now, when we claim refund under LUT, all of us know we claim a refund by filing a refund application. Now, in case of a refund application, wherever we file, we know that we have a time limit given under section 54, and that time limit is 2 years from the date of export. So relevant date से 2 साल के अंदर refund फाइल करना जरूरी है. That's what section 54 says. And relevant date in case of goods is अगर वो by ship जा रहे हैं तो when ship is loaded, या फिर when aircraft is leaving India if they are going by aircraft, और अगर by land जा रहे हैं तो जब भी वो custom frontiers को basically they are leaving outside India. अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो मेरे को पैसा कब आया या इनवॉइस कब बनाया, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो लेटर वो माना जाएगा कि मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वो डेट है जहां से मेरे 2 साल की समय सीमा शुरू होती है. नाउ फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगेन. सेक्शन 54 जो बात करता है, तो सेक्शन 54 बात करता है रेलेवेंट डेट की, और वो रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की बात करता है. वेयर एज रिफंड फाइल करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज मेंशन्ड इन द रूल. And what does the rule says? Rule specifically says कि आप जो refund फाइल करेंगे वो एक refund relevant period के लिए फाइल करेंगे. So we have a new terminology here which is called as relevant period.
We are not filing a refund for a relevant date. We are filing a refund for a relevant period. But वो refund application जो relevant period के लिए है, वो 2 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए from a relevant date. Now इन दोनों चीजों को साथ में कैसे पढ़ते हैं? मान लीजिए मैंने कोई एक्सपोर्ट करा जून 2020 के अंदर, और मैंने जो एक्सपोर्ट करा जून 2020 में, उसके लिए जो मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं, आई कैन फाइल बिफोर द एंड ऑफ जून 2022. लेट्स से दिस जून व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ इन जून 2020 व्हेन आई एक्सपोर्टेड माय गुड्स, मान लीजिए उस महीने में मेरे पास कोई खास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, बट उसके पहले वाले महीनों के अंदर व्हेन आई हैव एक्सपोर्टेड गुड्स, उसके पहले वाले महीनों में जब लेट्स से बिफोर मई 20, अप्रैल 20, मार्च 20, उन सब महीनों में मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है. देन इन दैट केस अ क्वेश्चन अराइजेस, क्या मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून इन चारों महीनों का मिला के एक कंसोलिडेटेड रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं बिफोर द एंड ऑफ जून 2022? देयर वन क्वेश्चन में अराइज कि कर तो सकता हूं, बट मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्रैल में मतलब मार्च, अप्रैल, मई का यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उन सब की टाइम लिमिट जा चुकी है. दैट टाइम लिमिट इज 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. तो उसकी रेलेवेंट डेट की तो समय सीमा जा चुकी है. बट द फैक्ट इज उन पीरियड के अंदर मेरे पास कोई एक्सपोर्ट नहीं था, मेरे पास में सिर्फ इनवर्ड था, कोई आउटवर्ड नहीं था मेरे पास में. आउटवर्ड मेरा सारा जून में है, तो मैं क्या पुराने महीने की आईटीसी को मेरे रिफंड एप्लीकेशन के पीरियड में जोड़ सकता हूँ? First, we are filing a refund for a relevant period. What is relevant period? Period for which I'm filing a refund claim. ये rule 89 सब rule 4 में लिखा हुआ. टैक्स पीरियड क्या होता है? टैक्स पीरियड जिस पीरियड के लिए हम रिटर्न फाइल करते हैं. तो टैक्स पीरियड का रेलेवेंट पीरियड से कोई लेना देना नहीं. यू मे फाइल अ रिफंड फॉर ए स्पेसिफिक मंथ, बट इट रियली डज नॉट मैटर कि आपने जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया है वो कौन से टैक्स पीरियड को बिलोंग करता है. आपका रिफंड एप्लीकेशन बहुत सारे टैक्स पीरियड मिला के भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू उसकी जो आउटर डेट है एक्सपोर्ट की, दैट शुड बी 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव वन सर्कुलर नंबर 125 जो कहता है क्या रिफंड क्लेम्स को बंच किया जा सकता है टुगेदर. एंड देयर वी हैव अ जजमेंट फ्रॉम दिल्ली ट्राइब्यूनल जो कहता है आप रिफंड एप्लीकेशंस को बंच कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर 2 फाइनेंशियल ईयर्स में भी रिफंड अलग अलग मंथ्स आ रहे हैं उनको भी आप बंच कर सकते हैं, और जीएसटी पोर्टल भी आपको फैसिलिटी देता है. And then we have a tribunal judgment of older regime in respect of this PAN Infotech Private Limited, which judgment clearly says कि अगर आपको एक फैसिलिटी रूल के अंदर एक रेलेवेंट पीरियड के लिए फाइल करने की दे रखी है और टाइम लिमिट आपकी एक रेलेवेंट डेट से चलती है, तो जब तक वो रेलेवेंट डेट का रेलेवेंट पीरियड एक्सपायर नहीं होता है तब तक के पीछे की सारी इनपुट्स को अपनी रिफंड एप्लीकेशन के अंदर क्लब कर सकते हैं. So meaning thereby what I am trying to say, if I am filing a refund application for the month of June 2020 और मेरे पास उसके पहले 2, 3, 4 महीने या वट एवर पीरियड मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है और उस दौरान मेरा कोई और एक्सपोर्ट नहीं है, तो मैं 4 महीने का रिफंड एप्लीकेशन एक साथ फाइल कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू कि मेरा जो एक्सपोर्ट का डेट है दैट शुड बी इन द जून 2022 और 20 एंड नॉट बिफोर दैट. वो अगर वो 2 साल का पीरियड मेरा जून 22 के पहले एक्सपोर्ट का एक्सपायर हो गया, देयर आई माइट हैव एन इशू. अदरवाइज आई एम एंटाइटल्ड बाय द लॉ, बाय द रीडिंग ऑफ द लॉ टू क्लेम द क्रेडिट इन दिस रिगार्ड. Similarly, we have a circular number 37/2018 which more or less talks about the same thing. वो कहता है आप जब रिफंड फाइल कर रहे हैं तो आपको ये नेक्सस देखने की जरूरत नहीं है कि आप जिन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिफंड ले रहे हैं उसका आउटपुट के साथ में क्या रिलेशनशिप है. दैट इज रियली नॉट द केस. What is important in this regard is कि आपका जो नेक्सस है उस पर्टिकुलर पीरियड का जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं उसमें जो एक्सपोर्ट है उसकी 2 साल की समय सीमा खत्म नहीं हुई हो. So I think it's a good proposition to look at it. See wherever your refund claims are getting time barred, आप पुराने पीरियड के क्रेडिट को उस रिफंड क्लेम का पार्ट बना सकते हैं क्या, सब्जेक्ट टू आपका जो एक्सपोर्ट है दैट इज विद इन द टाइम लिमिट. One more problem which arises in case of refund is, which is a very perennial problem, that is deficiency memos, where the officers at some time they do not understand what is difference between a show cause notice and a deficiency memo. They do not understand कि RFD 01 issue करने के बाद जो RFD 02 acknowledgement है, acknowledgement से पहले deficiency memo सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब वहां पे कोई डॉक्यूमेंट का लैप्स है, there is a lapse in improper documentation, और वो deficiency memo भी 15 दिन में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के देना जरूरी है. Now we have a judgment from Delhi High Court in case of Jian International, good judgment which says अगर 15 दिन के बाद कोई deficiency memo दिया गया है उसकी वैलिडिटी वहीं पर समाप्त हो जाती है.
और वो डेफिशिएंसी मीमो माना जाएगा कि डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ नहीं थी डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड दैट रिफंड हैज टू बी एक्नॉलेज, इट इज मैंडेटरी टू एक्नॉलेज दैट रिफंड. Now what happens is at a given point of time, a departmental officer, sometime they issue deficiency memo, then we refile the refund and they again issue a deficiency memo on the same issue because they are not satisfied with our documents which we have given. Their rule 90 says once a deficiency memo has been issued, agar ek baar issue ho gaya, you cannot issue a deficiency memo again, but practically they issue that. That's their prerogative, let them issue that. The question is मेरा time limit refund का क्या होगा? मेरा रिफंड का टाइम लिमिट दूसरी बार जब मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करा उसके बाद शुरू होगा, या मैंने जब पहली बार रिफंड एप्लीकेशन फाइल करा था उसके बाद जो डेफिशिएंसी मेमो आया था वहां से शुरू होगा? आई थिंक इन दिस रिगार्ड वी हैव लॉट ऑफ जजमेंट फ्रॉम द ओल्डर रिजीम्स. वी हैव दिस अग्नि प्लास प्राइवेट लिमिटेड, गुड योर इंडिया, बोथ ट्राइब्यूनल जजमेंट. एक अहमदाबाद ट्राइब्यूनल का जजमेंट है और एक दिल्ली ट्राइब्यूनल का जजमेंट है. दोनों कहते हैं कि अगर आपके रिफंड एप्लीकेशन में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी है और आप रिफंड लॉन्च कर चुके हैं, तो आपका जो रेलेवेंट डेट है रिफंड का, वो आपके रिफंड की जो डेफिशिएंसी से पहले वाला डेट जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करा है वहां से शुरू होगा. इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव करेक्टेड द डेफिशिएंसी. सो आई थिंक इन ऑल दोस केसेस वेयर डिपार्टमेंट से आपका रिफंड टाइम बार्ड इसलिए है क्योंकि आपने 3 बार डेफिशिएंसी मेमो देने के बाद जब आपका सही रिफंड फाइल हुआ तब वो टाइम बार हो गया. That is incorrect. That is not proper as per the understanding of the law. We can use this judgment. We can tell the officer that my relevant date will start from the date on which basically I filed the refund application for the first time and not from the subsequent dates in this regard. Okay. I will skip some of the slides which probably I think are not of much use. Yeah, I will take this issue again. That's a very interesting issue which crops up. Transaction value in respect of exports. And I think before I go on to that, I would like to show this slide, which kind of makes the concept very simple. Refund का formula क्या है? Zero rated turnover into net ITC divided by total turnover. So मान लीजिए मेरा total turnover 100 है, मेरी net ITC 100 है और मेरा zero rated turnover 50 है. Then in that case मैं refund के 50 रुपए के लिए eligible हूँ. As simple as that. That's a very simple calculation. रिफंड में मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है अनयूटिलाइज आईटीसी के केस में कि मैंने इस आईटीसी में से कितना इनवर्ट सप्लाईज को यूज करा एक्सपोर्ट करने के लिए. दैट्स नॉट हाउ दिस बेसिकली मैकेनिज्म इज वर्किंग. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज वन प्रॉब्लम व्हिच इज देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ आईजीएसटी लगा के एक्सपोर्ट और अंडर एलयूटी एक्सपोर्ट, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गुड्स. दैट देयर इज अ सर्कुलर नंबर 125 सर्कुलर ये कहता है कि जहां पर भी शिपिंग बिल और आपके जीएसटी और 1 की वैल्यू में डिफरेंस है तो लोअर वैल्यू का आपको रिफंड मिलेगा. नाउ हाउ डिपार्टमेंट हैज इंटरप्रेटेड दिस? डिपार्टमेंट कह रहा है जहां पे भी एफओबी और सीआईएफ सप्लाईज होती है, दैट मींस वन केस वेयर यू आर ओनली हैविंग द वैल्यू ऑफ गुड्स व्हिच यू आर चार्जिंग, अनदर इज यू आर चार्जिंग वैल्यू ऑफ गुड्स अलोंग विद चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर चार्जेस. तो आप जीएसटी का जब रिफंड लेने आएंगे तो आपके टोटल टर्नओवर के अंदर तो सारी वैल्यू इंक्लूड होगी, बिकॉज कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से वन स्पेसिफिक सप्लाई है जिसके अंदर गुड्स, इंश्योरेंस, फ्रेट एंड एवरीथिंग इज देयर. बट आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में हम सिर्फ गुड्स की वैल्यू लेंगे. तो somebody who is an 100% exporter, he has a big problem. अगर वो सीआईएफ एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल गुड्स की वैल्यू 100 रुपए बट सीआईएफ वैल्यू 120, तो उसका टर्नओवर ऑटोमेटिकली 100 डिवाइड बाय 120 हो जाता है एंड इट रिफंड्स बिकम्स इनकरेक्ट और उसका रिफंड प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है. एंड ही टेल्स द ऑफिसर कि सर मैं तो 100% एक्सपोर्ट करता हूं और आप मेरे को रिफंड अगर प्रोपोर्शनेटली कम दोगे, दैट मींस ये टैक्स का मैंने पैसा दिया सरकार को और सरकार मुझे रिफंड नहीं दे रही ऑन द लाइट ऑफ दिस सर्कुलर. The understanding of the circular by department is incorrect. What they are not understanding is what is the meaning of transaction value. And again, in this regard, we have a 2009 Tribunal Chennai judgment in respect of Sterlite Industries. ये judgment exact same issue के ऊपर excise regime का है. तो कहते हैं CIF और FOB वैल्यू के अंदर अगर डिफरेंस है और SSC फॉरेन करेंसी में अगर CIF वैल्यू इंडिया में लेके आ रहा है तो फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड उसका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है दैट इज गोइंग टू बी द CIF वैल्यू बट नॉट द FOB वैल्यू. एंड दैट इज व्हाई द अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलर गिवन बाय द कस्टम्स डिपार्टमेंट जब वो आईजीएसटी का रिफंड दे रहे हैं या प्रॉपर ऑफिसर जब वो एलयूटी का रिफंड दे रहे हैं, इन बोथ केसेस दे आर इनकरेक्ट, दे आर रॉन्ग एंड दे आर नॉट प्रॉपर्ली फॉलोइंग बेसिकली द regime of the law and they should be basically giving the refund in this regard. I come to 96B, which Akash talked about, where he said that this is that provision which department has not started invoking. Well, to some extent, I agree to what he says, but I have basically faced the heat of this provision. What is this rule says? Rule says अगर आपने export करके goods का export किया और आप refund application file कर रहे हैं, आप refund file करिए, there is no problem.
बट सब्सिक्वेंटली अगर आप जो विद इन टाइम लिमिट फेमा में दिया हुआ है विच इज 270 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, अगर आप उतने समय में फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर नहीं आते, यू नॉट एबल टू रियलाइज द एक्सपोर्ट अमाउंट, देन इन दैट केस अगर आप कोई रिफंड ले चुके हैं, वो रिफंड की आपसे रिकवरी हो सकती है अंडर सेक्शन 73-74 बाय इशूइंग अ शो कॉज नोटिस टू यू, और आपको तब वो रिफंड इंटरेस्ट के साथ में सरकार को चुकाना पड़ेगा। और अगर आप जिस दिन आप वो पैसा लेके आ जाते हैं, then in that case आप उसके 3 महीने के अंदर अंदर basically you can come forward and file a refund application and you can claim the refund जो आपने already pay कर दिया। Now what is the problem in this rule? First of all, this rule came on 23rd March 2020. That means उसके पहले वाला जितना भी period है उसके ऊपर this rule can't be made applicable. Unfortunately, as of now, department has not understood this concept. They think this rule has a retrospective applicability. तो जितने भी रिफंड क्लेम फाइल हुए इसके पहले वाले पीरियड के अंदर, और उसका अगर एक्सपोर्ट का पैसा 23 मार्च 2020 है उसके बाद में नहीं आया है, आज तक भी आउटस्टैंडिंग है, दे आर अप्लाइंग दिस रूल और उसके लिए वो शो कॉज नोटिस इशू करे, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज दिस रूल विल ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव, इट कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। Second, this rule has a problem. The problem is it says that recovery shall be made under section 73-74. 73-74 में refund का जो recovery है, that is for erroneous refund. That means जिस time पे refund दिया गया वो refund erroneous refund था, because जो refund हम आज की डेट में लेते हैं वो provisional refund नहीं है, वो final refund है, तो हमें जो refund मिला वो erroneous refund नहीं था जिस time पे दिया गया। सब्सिक्वेंट इवेंट से अगर मान लीजिए कोई रिकवरी का मैकेनिज्म आता है, वो 73-74 के मैकेनिज्म में कवर्ड नहीं है, सो टेक्निकली उसके लिए शो कॉज नोटिस इशू नहीं हो सकता। थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आना जरूरी है टू क्वालिफाई समथिंग एज एक्सपोर्ट, बट सेक्शन 16 के अंदर लिखा है कि आपको जो रिफंड मिलता है वो सर्टेन सेफगार्ड्स के साथ मिलता है। सो दिस रूल इट मे नॉट बी अल्ट्रा वायरस, ऐसा नहीं कि रूल अल्ट्रा वायरस हो सकता है, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी के अंदर देयर इज सर्टेन फॉल्ट। 3-4 things to understand in this. आरबीआई का मास्टर सर्कुलर कहता है कि मेरे 5% टोटल रिसीट्स को मैं सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे राइट ऑफ कर सकता हूं, मुझे आरबीआई के पास जाके कोई परमिशन लाने की जरूरत नहीं। सो टोटल रिसीट्स इन वन पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, उसका अगर 5% तक मैं रिसीव नहीं करता हूं, स्टिल दैट इज प्रॉपर एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा एंड आई एम एंटाइटल्ड टू क्लेम अ रिफंड इन दैट रिगार्ड। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गिव दैट मनी बैक टू द गवर्नमेंट। This rule 96B has one more problem. It talks about an undertaking. और ये undertaking में जो ये बात करते हैं proviso to section 16. Now interestingly, section 16 का कोई ऐसा proviso ही नहीं है जो undertaking में लिखा है कि मैं जो refund ले रहा हूँ I'll give it back to the government if I do not bring foreign currency and all those things. So this rule has one typing error also, which probably that needs to be corrected up till now. So this 96B is there. In terms of compliance, important है कि हमारे क्लाइंट्स को बता के चले कि अगर आप फॉरेन करेंसी विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड में नहीं लाते हो तो कस्टम्स में आपको ड्रॉबैक वापस देना होता है, एफटीपी में आपको बेनिफिट्स वापस सरेंडर करने होते हैं, जीएसटी में यू हैव टू गिव बैक द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट व्हेन यू ब्रिंग बैक द फॉरेन करेंसी टू इंडिया यू आर क्लेमिंग द रिफंड बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ आई विल कम टू सेकंड लास्ट टॉपिक व्हिच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट, या दिस। नाउ दिस फॉर दिस I would request all of you to have a little more attention, because this is something which we may not have explored, but that can be explored. This is a proposition which comes from the law. What is that? Refund of input tax used in zero rated supplies. The word is refund of input tax. What is input tax? Input tax, all of us know, is the tax charged on any supply, that is CGST, SGST, IGST on any supply. इसमें से जितना अमाउंट का मैं क्रेडिट लेता हूं और मैं उसको मेरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाता हूं जीएसटीआर 3B के थ्रू, दैट बिकम्स माय आईटीसी अवेल्ड। अभी तक जितने भी प्रोविजंस हमने पढ़े उसमें हम रिफंड की जो बात करें दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट व्हिच इज पार्ट ऑफ माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थ्रू द रिटर्न्स। व्हाट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज, कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी दैट विदाउट क्लेमिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट I can still claim refund of input tax? मतलब मैंने मेरे इनवर्ट्स पे जो भी टैक्स पे करा है मैं उसका क्रेडिट बिना क्लेम करे आई कैन गो फॉरवर्ड एंड क्लेम अ रिफंड ऑफ इट, सब्जेक्ट टू कि वो मेरी इनवर्ट सप्लाईज को मैंने मेरी जीरो रेटेड सप्लाईज के अगेंस्ट में यूज करा है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ब्लॉक क्रेडिट्स, वो सब चीजें जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पार्ट नहीं बनती है, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। आई एम टॉकिंग अबाउट वो सप्लायर जिसकी सब क्रेडिट मेरी जीएसटीआर 2A में नहीं दिखती, पर उसने इनवॉइस पर टैक्स चार्ज करा और मैंने उसको पे कर रखा है, या फिर उसने गलत टैक्स चार्ज कर रखा है, या फिर लेट्स से कोई डीटी कोई एसईजेड यूनिट है जो रिफंड क्लेम करना चाहती है एंड सडनली गवर्नमेंट से दोनों एसईजेड यूनिट कांट क्लेम अ रिफंड,
या फिर there is a tax filed by the supplier, tax paid to the supplier, but refund is that is not available in my ITC ledger. Why am I saying this? I come back to the definition of refund. And you read definition of refund, it says refund includes refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services of both, or on input and input services used in making such zero-rated supplies. So it says tax paid on zero-rated supplies of goods or services of both, or on input and input services used in making zero-rated supplies, or refund of on supply of goods and services regarded deemed export or unutilized input tax credit. ये नहीं बोलता कि आपको हमेशा क्रेडिट का ही रिफंड मिलेगा, वो बोलता है अगर आपने कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स पे करा है और वो टैक्स आपने अपनी जीरो रेट सप्लाईज के अगेंस्ट में इस्तेमाल करा है, वो रिफंड की डेफिनेशन में कवर होता है. और 54(1) कहता है एनी पर्सन कैन क्लेम अ रिफंड. So that is why law, according to me, gives that particular provision as per the meaning, as per the definition of refund, that even if you do not claim any input tax credit, सब्जेक्ट टू कि आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने उस इनवर्ड को अपनी जीरो रेट सप्लाई के अगेंस्ट में यूज करा है, यू कैन गो एंड क्लेम अ रिफंड इन दैट रिगार्ड. हाउ विल यू क्लेम अ रिफंड? यू विल हैव टू फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन अंडर एनी अदर कैटेगरी. Will officer accept it? It is going to be very difficult for him to accept, but legally there is no challenge, no problem in basically claiming a refund in this regard. And in fact, ये पूरा proposition उस concept को और confirm करता है जो हमने starting में बात करी कि export के ऊपर government किसी भी तरीके का tax नहीं लगाना चाहती. तो अभी तक जितना भी सब बात है, LUT है नहीं है, IGST किस तरीके से करा, अदरवाइज नहीं करा, एट द एंड ऑफ इट अगर मैंने मेरी इनवर्ड पे किसी भी तरीके का टैक्स पे करा और वो मेरी जीरो रेट सप्लाई से लिंक्ड है, the definition of refund says I can come claim a refund of it. There is absolutely no problem in this regard. Last topic before we come to an end and we talk about certain questions if you have, that is ocean freight on CIF basis of all the imports which I have done, whether taxable or not. Few days back I took a virtual session on the CIRC platform only. We talked about this judgment, but because it is related to the topic, I will very briefly discuss this. Honorable Supreme Court has said कि रिवर्स चार्ज के अंदर वो सब लोग जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं CIF बेसिस पे, और जहां पर बाहर बैठा एक्सपोर्टर बाहर वाली शिपिंग लाइन को एक स्पेसिफिक पेमेंट करता है फॉर इंश्योरिंग दैट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दे रीच टू द कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया, और उसका पेमेंट इंपोर्टर यहाँ इंडिया में बैठ के करता है जिसकी वैल्यू उसे नहीं पता वो कितना शिपिंग चार्जेस का पेमेंट कर रहा है, बट एक लंपसम अमाउंट जब वो एक्सपोर्टर को देता है और एक्सपोर्टर कह रहा है इसके अंदर माल का पैसा भी और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी है, और आपको मैं नहीं बता रहा हूं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कितना है, और IGST का नोटिफिकेशन नंबर 10 जो स्पेसिफिकली इंपोर्टर को बोलता है दैट यू आर द रिसिपिएंट लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. Honorable Supreme Court has said that is not liable to be paid by the importer in India for a simple reason कि एक composite supply है जो बाहर वाला एक्सपोर्टर यहाँ इंडिया वाले इंपोर्टर को कर रहा है, जिसकी प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर इंपोर्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठ के कस्टम्स ड्यूटी और IGST पे कर रहा है और इंपोर्ट, एंड दैट इज व्हाई इसके ऊपर एक सेपरेट लेवी RCM की नहीं आ सकती है. नाउ कॉन्सेप्चुअली द बॉटम लाइन इज कि टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट इस जजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टच किया, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिसिपिएंट. सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आर्ग्यूमेंट जो असेसी की तरफ से था वो ये था कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में इंपोर्टर तो रिसिपिएंट है ही नहीं, क्योंकि रिसिपिएंट की डेफिनेशन है रिसिपिएंट मींस पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, और इस ट्रांजैक्शन में इस इंपोर्ट फ्रेट के ऊपर जो कंसिडरेशन पे करने वाला इंसान है दैट इज द एक्सपोर्टर सिटिंग आउटसाइड इंडिया टू द शिपिंग लाइन सिटिंग आउटसाइड इंडिया, सो दैट इज व्हाई इंपोर्टर के ऊपर लायबिलिटी आ ही नहीं सकती. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसेंडिंग व्यू दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट नो, इंपोर्टर हु इज इन इंडिया इट इज आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. हाउ? उन्होंने रिसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ी 2 सबसेक्शन 93 में. उन्होंने बोला ए में तो लिखा हुआ है कि जो कंसिडरेशन पे करता है वो रिसिपिएंट है. उन्होंने बोला सी के बाद वाला पार्ट पढ़ी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू whom a supply is made shall be construed to as a reference to the recipient of supply. तो उन्होंने बोला जिसने कंसिडरेशन का पेमेंट करा वो तो रिसिपिएंट है ही है, पर जिसको सप्लाई करी गई वो भी रिसिपिएंट माना जाएगा. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसको सप्लाई करी है कहां से देखेंगे, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन देखेंगे, बिकॉज GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, एंड देयर दे से कि प्लेस ऑफ सप्लाई की जब आप प्रोविजंस देखते हैं, देन इन दैट केस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, in case of transportation of goods
The destination of goods is the place of supply. So because destination of goods is India, the recipient, that is the importer, is also sitting in India. That is why उसको हम recipient मान सकते हैं, और that means इस transaction में वो recipient है. अगर ये फिलोसफी जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, अगर आप इसको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करें, गोइंग फॉरवर्ड देयर कैन बी लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे रिसिपिएंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो सकता है. हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली जिसके ऊपर रेवेन्यू स्टिल नॉट अग्रीइंग. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कॉम्पोजिट सप्लाई है. जब आप कॉम्पोजिट सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कॉम्पोजिट सप्लाई में कॉन्सेप्ट है दैट इज सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. नाउ एक्सपोर्टर सिटिंग आउटसाइड इंडिया, उसने यहाँ पे ये सप्लाई करी है, but he is not the person who is making the supply. He is not the taxable person क्योंकि वो registration लेने के लिए बाध्य नहीं है GST law में. And that is why there is a possibility that tomorrow revenue may go for a reference further against this judgment. However, as on date, this judgment is a Supreme Court judgment. It has attained finality. और वो सभी लोग जिन्होंने रिवर्स चार्ज का टैक्स पे नहीं करा पुराने पीरियड्स का, उन्हें अब पे करने की जरूरत नहीं है. आगे ऑब्वियसली कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. वो सब लोग जिन्होंने टैक्स पे करके क्रेडिट लिया हुआ है, डिपार्टमेंट वो क्रेडिट वापस नहीं ले सकता. डिपार्टमेंट बोल सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ ऑफ द लैंड है, दैट मींस ये टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप कंपल्सरी रिफंड क्लेम करिए. बट इन दैट रिगार्ड वी हैव लॉट ऑफ जजमेंट फ्रॉम ट्राइब्यूनल व्हिच सेज अगर आपने रिवर्स चार्ज का कोई टैक्स बोनाफाइड बिलीफ में पे किया है, जो सब्सिक्वेंटली डिसाइड होता है कि पे करने की जरूरत नहीं थी, तो भी आपका आईटीसी वापस नहीं लिया जा सकता बिकॉज ये रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज है. वो सब लोग जिन्होंने क्रेडिट नहीं लिया या क्रेडिट लेके रिवर्स कर सकते हैं, दे कैन गो एंड क्लेम अ रिफंड. रिफंड हैज टू बी 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये होगा कि रेलेवेंट डेट क्या है, फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और फ्रॉम डेट ऑफ जजमेंट. कंजर्वेटिव व्यू इज डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब 2020 के पहले अगर किसी ने ओशन फ्रेट पर टैक्स पे करा है तो उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकता. But one can take a view because this refund is arising out of the judgment from the Supreme Court. So 2 years will be counted from the date of the order given by the Honorable Supreme Court. अगर किसी ने इंटरेस्ट पे करा है गवर्नमेंट को in this regard, they can also go ahead and claim a refund. There is absolutely no problem in this regard. FOB ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आंसर नहीं है बिकॉज FOB के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं पूछा गया था. दैट इज स्टिल ओपन. सर्विस टैक्स लिटिगेशन क्या होगा? जो पुराना एक सर्विस टैक्स का लिटिगेशन चल रहा है, वहां पर मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है. साल स्टील का जजमेंट है जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट हैज गॉन इनटू सुप्रीम कोर्ट. दिस जजमेंट इज ओनली फॉर द जीएसटी regime, so that is not applicable here. So I think with this probably I would like to put a pause to my monologue, but before we basically go to the questions, one thing which I would like to end with, and that's how typically I would like to end any conversation, that is पिछले 5 साल की जो मैंने बात करी जीएसटी के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, या मे बी इन दिस टॉपिक इन अदर वे, what government thinks we are doing as chartered accountants. And I think that's what basically think that what GST has done is GST has made this for all the chartered accountants, all the professionals. They have to just sit there, file a return. Client would obviously pay for the compliance cost, and that's how the practice has suddenly becomes wonderful. It has gone multifold, and the attitude of government is like this. They feel that all of us are basically minting money out of it. On the other side, if you look at the professional will say what they see on the right hand side, and they will say on the right hand side that because of GST, life has become tremendously busy. Every month we are filing multiple returns. There are a lot of questions which the client is asking. At times he pays for the advisory, at times he doesn't pay for the advisory, at times we empathize with him, sometimes we don't empathize with him. I think extreme left is incorrect perception, extreme right is incorrect perception. In दोनों की जो बीच की चीज है, that is the correct perception. That is somewhere we are lying in between, and somewhere there has to be balance. This GST law, it is still a very new law. A lot of the concepts, in fact, पिछले 1.5 घंटे में मैंने जितनी चीजें बोली, I could not bring a lot of judgment from the current regime, except one Supreme Court judgment on ocean freight. Otherwise, everything which I had to go back to the older regime. So law को settle होने में थोड़ा time लगेगा, and that is why it is a law which has a lot of potential for multiple interpretations. It is just that how strongly you can put forth your interpretation to come to a certain conclusion. So thank you so much to CIRC, Anil Yadav ji, and all the other office bearers for giving this wonderful opportunity. Thank you to all the participants for listening to this. If there are any questions, I'll be very happy to take those questions. Thank you so much. Thank you, sir, for covering this topic so well. And now moving forward, we are taking queries.
We are looking forward for your all interesting queries. You can raise your hand or type in chat box. If we'll try to answer them one by one. I can see one question. Can I answer this question, madam? Okay, sir, I will. Yeah, so Okay. there is one question, whether In refund chat of, box. yeah, in chat box, whether refund of accumulated credit on account of inverted duty structure is available only for those inputs where the rate of GST is higher than the output supplies for all kind of input, all kind of inputs. No, it is applicable for all kind of input. In fact, it's a very interesting thing. The concept is like this. अगर आपकी टोटली इनवर्ट के अंदर कोई भी आपकी एक ऐसी इनवर्ट सप्लाई है जिसकी रेट ऑफ टैक्स आपके आउटपुट से ज्यादा है, तो पहले आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर्मूले में जाने के लिए. अब आप जब फॉर्मूले में जाते हैं तो फॉर्मूला नेट आईटीसी पे बात करता है. फॉर्मूला ये बात नहीं करता है कि जिसकी रेट ऑफ टैक्स हायर थी आप सिर्फ उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं. फॉर्मूला ये बोलता है उस महीने की नेट आईटीसी निकालिए, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी का टर्नओवर निकालिए, टोटल ड्यूटी वाला टर्नओवर निकालिए और आपने जितना टैक्स पे करा उसको माइनस कर दीजिए. सो कॉन्सेप्ट इज इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इवन वन इनवर्ट सप्लाई, यू कैन गो टू द फॉर्मूला. फॉर्मूले से अगर आपको रिफंड बनता है यू कैन क्लेम फॉर इट. सर्कुलर नंबर 125 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है. अगर आप 125 पढ़ेंगे तो इन्वर्टेड ड्यूटी में इस चीज को वो एक्सप्लेन करता है. Sir, your next question is freight charged on export turnover. Problem in calculation is there. What could be the probable solution? Probable solution is when you file the shipping bill, their IGST taxable value you have to punch manually. So what happens when you file the shipping bill, your CHA files the shipping bill, IGST taxable value comes automatically and it only picks the value of the goods. There the option is you can go there, manually change the value and manually you can change the IGST figure. Once you do that, your refund will come. Another question is, can a person who is not registered under GST export services out of India up to rupees 20 lakhs amount received in foreign exchange? Up to 20 lakhs, he is not required to take registration if he is only dealing in services. If he is dealing in goods, he has to compulsory take the registration. The other question is, can I take refund of tax paid on purchase of fixed assets if it is used for export? No, not through accumulated scheme, only through you pay IGST और जो आप IGST पे करेंगे उससे इस capital goods का ITC को use कर सकते हैं. Sir, next question is how to calculate refund for Rule 89 subsection 4A and 89 subsection 4B as per formula. So 4A4 is 4A4B is applicable for all those people जो advance authorization में import कर रहे हैं या merchant export या otherwise. वहाँ पे formula ये कहता है कि आपने जो input and input services use करे हैं output supply करने के लिए उसका you have to file the refund application. Now there is a circular which says that आपको 1-to-1 nexus prove करने की जरूरत है और आपको other category में refund लगाने की जरूरत है. Another way is there is a recent Gujarat High Court judgment which says अगर कोई SSC 4A4B follow नहीं करना चाहता है और वो डायरेक्टली 4 में अगर जाता है, he can go there and he need not follow 4A4B. So answer is you can directly go to 4, you need not follow 4A4B. If you want to follow 4A4B, तो आपको 1-to-1 nexus prove करना पड़ेगा, which all of us know it's a very difficult thing to do, but that's how the rule is written. The next question is, in the case claim of refund of export of goods amount received within 90 days compulsory. No, it is 270 days from the date of export. From the date of invoice, उसमें भी आप extension file कर सकते हैं. You can claim an extension from RBI, and within that extended period, if you receive, you're not required to give any refund back to the government. Next question: does the supply by SEZ to DTA will attract GST to be charged by SEZ? Also, importer need to file BOE and pay in RCM. Is it double taxation? No, not double taxation. So if you buy SEZ to DTA, yes, it is taxable. Then in that case, what SEZ has to do, उनको अपने invoice पे tax लिखने की जरूरत है. अगर it is supported by bill of entry, then SEZ is not required to pay the tax. The DTA unit has to only file the bill of entry and pay the tax. SEZ के ऊपर कोई tax liability नहीं आएगी. Same concept, आप जब GSTR 1 के rules पढ़ते हैं या GSTR 1 के respect में instructions पढ़ते हैं, वहाँ पे भी यही चीज लिखी है. Otherwise, also in this case, as I said, section 51 यहाँ पे SEZ Act का काम आएगा. तो आपको बोलेगा अगर बिल ऑफ एंट्री है तो सिर्फ DTA टैक्स पे करेगा. अगर बिल ऑफ एंट्री नहीं है तो SEZ यूनिट को टैक्स कलेक्ट करके पे करना. Next one is, in case of variance in sales value taken in invoice and shipping bill, what procedure to follow? First, there should not be any variance. जहाँ पे भी variance है वहाँ पे आपको shipping bill में IGST value, taxable value और tax को manually change करना है.
अगर वेरिएशन है भी, देन इन दैट केस आपको इफ यू रियली वांट टू क्लेम द रिफंड, तब आपको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, अपनी जीएसटीआर में वही वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो शिपिंग बिल में वैल्यू लिख रहे हैं. Legally it may not be the correct position, procedurally it would be the correct position, but as I already said, government का intention export पे tax लगाने का है नहीं. तो अगर difference आएगा भी तो still it is a difference which can be easily explained to the governmental office. Next question, says supply to DTA for 0.1% sale will the importer need to file BOE compulsory? SEZ is supplying at 0.1%. Okay. First, probably DTA. that to SEZ to DTA, correct. Why are they doing that? ये अपने आप में एक अलग सवाल है. But अगर वो कर रहे हैं, then in that case probably BOE के through करना would not be the correct way. SEZ should charge a tax and then DTA should pay it to them, and SEZ should show that in GSTR1. Any other question? Whether GST is payable by SEZ unit in case of supply of service by SEZ unit to DTA. Unit. Yeah, GST is payable by the SEZ unit. In one of our audience person want this presentation for their record purpose. I will share the presentation, no problem. Okay. I think question is over. So one more question. INCS DTA supplies to SEZ who should claim the refund, DTA or SEZ? DTA supplies to SEZ who should claim the refund? DTA should claim the refund. There is a rule 89.1 which clearly talks about it. However, let's say DTA decides not to claim the refund and SEZ has claimed the credit. There is a judgment recently from Madras High Court in case of Platinum Holding, where they have clearly said that SEZ unit can also claim the refund because section 54 says any person can claim the refund. So answer legally is any of them can claim the refund, but only one person can claim refund. झगड़े में नहीं पड़ना है तो ask DTA unit to claim the refund under 89.1. I think question is over. Yeah. Thank you, yes, sir, for this wonderful session and wonderful question answer session. Thank you. So I would like to take the opportunity to thank all the members, to yes, sir, to Akash, sir, to present here for this virtual meeting. And thanks to all the audience person for their commitment towards learning. And on behalf of CIRC of ICI, will ensure the regular knowledgeable session for updating you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Akash. Thank you, our coordinator person. Thank you, Yashi, for sir. nice deliberation. Thank you, Members of Thank you. My pleasure, sir. Thank you. A wonderful session, sir. Thank you so much, madam. Should I close?